Hello, ladies and gentlemen. Welcome aboard. This is GD Esports presents Icebreak Series 2. The CODM Arena awaits. My name is Raider, and I will be the one who is going to storytell and cast the whole series of semi-finale and the grand finale. 2 matches of semi-finale will be there, and then the grand finals, the champions will be awaited with a massive prize pool of 10,000 rupees. Well, let's see what happens and let's see how the details are going to go forecasted. So, well, इंतजार करेंगे guys इन सारी चीज़ों के बारे में, बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में, बात करेंगे उन 4 टीम्स के बारे में जो कि आज अपना बेस्ट देने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और फिलहाल आइसब्रेक सीरीज 2 को जीती हुई देखेंगे। बट एक छोटा सा मैं आपको रिमाइंडर दे दूं, सीरीज 1 गॉडलाइक के नाम किया था, तो क्या गॉडलाइक सेमीफाइनल में वापस आ चुकी है? फिलहाल क्या गॉडलाइक अपने आप को ग्रैंड फाइनल से ले जा पाएगी? ग्रैंड फाइनल्स में क्या चैंपियन बन पाएगी? आज की स्ट्रीम के अंदर सब कुछ आपको पता चलता हुआ दिखेगा। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अ लॉट मोर डिटेल्स आर अबाउट टू बी हियर एनी टाइम सून एंड यू विल चेक ऑल ऑफ द थिंग्स गाइस आउट। बट बिफोर दैट, चलिए प्राइस पूल की बात कर लेते हैं। बात करते हैं क्या वो स्टेक्स हैं जिसके पीछे ये टीम्स यहाँ पे आई हुई है। फिलहाल द मैसिव प्राइस पूल इज ऑफ 10,000 INR। फर्स्ट प्लेस यानी कि चैंपियन की बात करी जाए तो आइसब्रेक सीरीज 2 के जो चैंपियन रहेंगे उनको 4,000 INR से नवाजा जाएगा। सेकंड प्लेस विल गेट 2,000 रुपीज। थर्ड एंड फोर्थ प्लेस को यहाँ पे मिलने वाला है 1,000 रुपीज ईच। एंड वहीं अगर बात करी जाए 5th to 8th place, there will be 500 rupees each distributed amongst the team. But right now, let's talk about the brackets. Let's talk about the bracket which will showcase कि कौन-कौन सी टीम्स हमारे एक दूसरे के सामने आते हुए दिखेंगे और किस तरीके से फाइट लेंगी. So first of all, in the semi-finale, first match will be between NS Esports versus GodLike Esports. And इनके जो विनर रहेंगे वो स्ट्रेट अवे ग्रैंड फिनाले की तरफ जाते हुए दिखेंगे. वहीं अगर बात करी जाए सेकंड मैच ऑफ सेमीफाइनल, तो वहाँ पे आपको NorthKings वर्सेस मेमोरिया के बीच में फाइट देखने को मिलने वाली है. एंड इनके जो विनर होंगे वो जाएंगे फेस ऑफ करेंगे पहले सेमीफाइनल के मैच के विनर के साथ. So this is how the brackets are going to be there. So definitely guys, इन टीम्स को अपना बेस्ट देना पड़ेगा, सारे के सारे प्लेयर्स को अपना बेस्ट देना पड़ेगा. बट चलिए बात करते हैं मैप वीटो की, बिकॉज दैट्स अनदर ब्यूटीफुल डिटेल दैट वी हैव टू लुक इनटू कि कौन से वो मैप्स है, कौन से वो मोड्स हैं जिनके ऊपर ये पूरी फाइट चलेगी. तो बता दें आपको, आज के दिन का पहला मैच होगा NS Seoul versus GodLike Esports, and the first map will be Hacienda. The mode will be Hardpoint, one of my loveliest maps, one of my loveliest modes. So definitely काफी ज्यादा मजा आने वाला है. मैप नंबर 1 वो रहेगा. मैप नंबर 2 की बात करी जाए, स्टैंड ऑफ के मैप में आपको सर्च एंड डिस्ट्रॉय देखने को मिलेगा, 7 स्कोर लिमिट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जैसा कि आप जानते हैं सारा के सारा डिटेल्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन इट कम्स टू द थर्ड मैच, बेस्ट ऑफ 3, वो देखने को मिलेगा. टेक ऑफ के मैप में कंट्रोल करेगा मोड, व्हिच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. देखने वाली बात ये रहेगी कि फिलहाल गॉडलाइक जैसी टीम जो कि कहीं ना कहीं सर्च एंड डिस्ट्रॉय में बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली वेल खेलती है, वो रिस्पॉन्स के अंदर किस तरीके से करके आएगी. लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में बता दिया गाइस, गॉडलाइक वाज द विनर ऑफ सीरीज 1 दैट वाज प्रेजेंटेड बाय GD Esports. सो डेफिनेटली गाइस मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि इस बार भी कुछ वैसा ही कमबैक हमें देखने को मिल सकता है इनकी तरफ से. सो दिस इज द मैप वीटो, यू गाइस ऑलरेडी चेक्ड अबाउट इट. बट चलिए फिलहाल गाइस आगे डिटेल्स के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट डिटेल्स वी विल बी लुकिंग इनटू इट एज वेल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, as you can see, 3 मैचेस रहेंगे, बेस्ट ऑफ 3 है, बहुत ज्यादा मजा यहाँ पे आने वाला है. we'll be diving into the banned items and stuff like that as well. as soon as the details are going to be here, we'll check about that as well. ये दीजिए गाइस, बैंड आइटम आपके सामने आ चुके हैं. कुछ वेपन्स हैं जो बैंड है, कुछ गन्स है जो बैंड है, कुछ यूटिलिटीज हैं जिन्हें यहाँ पे बैन किया गया है. तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं सेकेंडरी वेपन्स की, तो वहाँ पे आपको क्रॉसबो D13 सेक्टर यूज करने का अलाउंस नहीं मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्कोर ट्रिक्स की अगर बात करी जाए, यूओवी, एडवांस यूओवी या फिर काउंटर यूओवी, इन सब चीजों की बात करी जाए, ये बैंड देखने को मिलने वाली है. वही ऑपरेटिव स्किल्स की बात करी जाए, शैडो ब्लेड, ट्रांसफॉर्म शील्ड, बुल चार्ज, हाइव जैसी यहाँ पे जो फिलहाल कुछ स्किल्स हैं इन्हें बैन किया गया है. गन्स में थंपर भी बैन है, थोड़ा सा निराश हूं. थंपर अपने आप में काफी ज्यादा एक अपीलिंग गन है, बट एनीवे गाइस, इट हैज बीन बैन्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट, लीथल यूटिलिटीज की बात करी जाए, ट्रिप माइन, मॉलीज, थर्माइट, कॉन्टैक्ट ग्रेनेड, सब कुछ बैन है. यानी कि एक फेयर इनफ कॉम्प्लेक्स यहाँ पे गेम देखने को मिलेगा. एंड साथ ही साथ बैंटर्स को अवॉइड करने के लिए इमोट्स भी अलाउड नहीं है. इमोट्स आर 60 प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द मैच. सो डेफिनेटली गाइस, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग डायरेक्टली डाइव इन करेंगे बहुत जल्द अपने आगे वाले मैच में. फर्स्ट मैच ऑफ द सेमीफाइनल विल स्टार्ट एनी टाइम सून. सो गाइस, आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए, बिकॉज आज का दिन काफी ज्यादा अमेजिंग, काफी ज्यादा रोमांचक. टॉप टू द बॉटम द फाइट्स आर गोना बी एम्पल एंड शुड आई से एग्रेशन भी कहने के काफी ऑन पॉइंट देखने को मिलने वाला है. बात करी जाए अगर पहली 2 टीम्स की, फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट 2 टीम्स व्हिच आर गोइंग टू फेस ऑफ इन द सेमीफाइनले. वेल, दोस आर द टीम्स व्हिच आर गोना बी known as NS Official and GodLike Esports. So these are the 2 teams which are going to face off really very soon. We'll look into their details as well. But before that, guys, these are the banned items. Check out the list so that you can actually learn about them. But there we go. The process are in front of you. NS Seoul versus GodLike Esports. If I talk about GodLike Esports, we are going to see Trunks, Burns, Vegas, Neutrino, and Learn as well. So we all know ये जो एक रोस्टर है, ये जो 5 खिलाड़ियों की एक मैं कहूँगा मुट्ठी है, वो फिलहाल काफी टाइम से चलती आ रही है. फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस होल कॉडम सिनेरियो, वी हैव बीन सीइंग दीस 5 गाइज प्लेइंग विद ईच अदर. कुछ भी हो जाए कॉडम में, कितने भी अप डाउन्स आ जाए या फिर इनकी लाइफ में कितने भी अप डाउन्स आ जाए, लेकिन ये 4 खिलाड़ी, देयर सिनर्जी इज एम्पल. दे हैव बीन प्लेइंग विद ईच अदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड आई बिलीव वो इनके गेम प्ले के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखने वाला है. बट व्हेन इट कम्स टू NS Seoul, वहाँ पे देखने को मिलेंगे टेरिस, डियोंग,
डांगला, एंड उसके अलावा अगर बात करी जाए क्लेवरली देखने को मिलने वाला है, और साथ ही साथ SN1 भी देखने को मिलेंगे. So these are the 5 men which are going to perform for NS Seoul, but we have to check out that how their performance is gonna go. And now moving up ahead, I believe बहुत ज़्यादा इंतजार हमने कर लिया है. Directly we'll dive into the game, I believe. So yes, of course, waiting for the Icebreak Series 2 to start, and the semi-finale first match kicks off soon enough. And there we go. I guess बातचीत करने में थोड़ा सा टाइम बीत गया, but there we go guys. GodLike एक स्टार्ट के साथ, एक लीड के साथ हमें देखने को मिल रही है. बात करें हार्ड पॉइंट ओन करने की, 48 पॉइंट्स उनके पास ऑलरेडी निकल के आ चुके हैं. 20 सेकंड का बैरियर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें कोशिश रहेगी एनएस की तरफ से कि शायद वो काउंटर यहाँ पे कर ले जाए, बट कुछ खास मैं कहूंगा वहां पे चीजें देखने को नहीं मिल रही है. प्रीडेटर मिसाइल किल अभी के अभी निकल के आ चुकी है. गॉडलाइक की अगर बात करी जाए, वेल देयर वी गो, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, बट वीगेस को डाउन किया जाएगा. ट्रिक्स का इस्तेमाल करके वो थोड़े बहुत पॉइंट्स इकट्ठे करने की कोशिश जरूर से कर रहे हैं, बट कुछ खास आई गेस उस समय कामयाबी निकल के नहीं आ पाई. हार्ड पॉइंट की बात करी जाए, वेल गॉडलाइक इज ओनिंग इट, दैट्स व्हाट वी वांट टू टेल राइट नाउ. वेल लुक एट दैट लर्न की बात करी जाए, फिलहाल उनकी स्विच ब्लेड बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर गई. मैं अगर बात करें अभी ट्रंक्स की, तो देखिए उनकी तरफ से भी कुछ अच्छे शॉट्स थे, हालांकि उनको टेक डाउन किया जाएगा. बर्न्स आल्सो रिसीव्स द सेम फेट. आई मीन अगर बात करी जाए एनएस की, देखिए एग्रेसिव काफी निकल के आ रही है. वो टीम बहुत ही अच्छा सेटबैक देने की कोशिश कर रही है गॉडलाइक को, लेकिन गॉडलाइक किस तरीके से इन चीजों को काउंटर करेगी, दैट्स व्हाट वी हैव टू लुक इनटू. न्यूट्रिनो ऑलरेडी गेट्स टेकन डाउन. हार्ड पॉइंट अभी के लिए तो सियोल के हाथ में देखने को मिलेगा, यानी कि एनएस के हाथ में देखने को मिल रहा है. बट कंटेस्ट करने के लिए गॉडलाइक बार बार शुरू से अपना प्रेशर बना रही है, वो पकड़ लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद उसमें ज्यादा कामयाबी मिल नहीं पा रही है समय. लेकिन हार्ड पॉइंट अभी के लिए एम्प्टी है. बहुत बड़ा मौका है गॉडलाइक और एनएस दोनों के लिए कि वो जल्दी जाके ग्रैब करे, और एनएस ने इस चीज को भापा, और एनएस की तरफ से देखिए फिर से हार्ड पॉइंट को कंट्रोल किया जाएगा. एंड दे आर लिटरली रूलिंग ऑन इट राइट नाउ, बट गॉडलाइक इज स्टिल हैविंग द लीड ऑफ 68 points. They are actually bagging 68 points right now, and when it comes to NS, they have got only 48. That means a lead of 20 points is there right now, but let's see how much more lead counter they can actually come up with, because definitely countering those leads are going to be very important. They have to gain the points, they have to gain the enthusiasm, and then only they will be the reigning champion of this series 2 as well. But अभी जो फाइट है वो है सेमीफिनाले से ग्रैंड फिनाले तक का जो स्लॉट है वो कंफर्म कराने का. दिस इज द बैटल फॉर द स्लॉट ऑफ ग्रैंड फिनाले. कैन दे एक्चुअली आउट परफॉर्म? वी हैव टू चेक इट आउट. गॉडलाइक फिर से अपनी लीड को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए दिखेंगे. गॉडलाइक जब भी रिस्पॉन्स में आती है, जब भी हार्ड पॉइंट्स में आती है, ये चीज हमेशा देखने को मिलेगी कि गॉडलाइक लव्स टू एक्चुअली अपहोल्ड इट. शुरू में वो प्लेयर्स को, यहाँ पे जो एनिमी प्लेयर्स हैं, एनिमी टीम है, उनको थोड़ा सा मैं कहूँगा जेल होने देती है, चेरिश होने देती है. जब उनको लगता है कि वो फिलहाल परफॉर्म कर सकते हैं, तभी गॉडलाइक आती है उनका पूरा मोटिवेशन का पूरा मेटा एक्सप्लोर करके तोड़ने के लिए. आप देख सकते हैं इस समय गॉडलाइक वो भी यहाँ पे चिंता का विषय बनती हुई दिखेगी. शॉटी का इस्तेमाल, लुक एट द शॉट ऑफ द शॉटी. काफी अमेजिंग टेकडाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है. दैट्स लवली. Coming up, a brutal takedown is there right now, but NS once again grabs the hard points from the hands of team GodLike Esports. Well, GodLike क्या वापस आ पाएगी, क्या वापसी करेगी, रिटर्न करेगी अपनी इस फाइट के अंदर? I hope so. Well, of course, they are looking strong right now. GodLike is once again chasing, and GodLike manages to bag out 100 points. You guys remember, guys, कुछ समय पहले, I guess 1 year ago, we had the score limit of 150, but right now, according to WCC 2022, आप जैसे कि देख सकते हैं, स्कोर लिमिट जो है, टारगेट जो है वो 250 कर दिया गया, और साथ ही साथ द टाइम ब्रैकेट इज गोना बी ऑफ 10 मिनट्स. बट वो 10 मिनट का जो टाइम ब्रैकेट है वहां तक कोई पहुंचता नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी उससे पहले हार्ड पॉइंट ओन करके 250 पॉइंट्स का जो एक टारगेट होता है वो सेट कर लिया जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएस के टेरिस की तरफ से एक अच्छा खासा डबल किल आ सकता था, बट ही गेट्स काउंटर्ड, ही गेट्स टेकन डाउन. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी टॉक अबाउट दोयोंग, he is trying his level best with the Crick 6, trying his level best to maneuver the fight, get the blows, but he fails to do so. वो फ्रोज, वो लेट्स से किल्स, वो फिनिशेस, वो निकल के अभी नहीं आ पा रहे हैं. फिलहाल टेक डाउन करने में थोड़ी सी मुसीबत जरूर से होती हुई दिखेगी टीम एनएस के लिए. एंड स्टिल गॉडलाइक इज लीडिंग लाइक अ बीस्ट एट दिस मोमेंट. गॉडलाइक देखिए शुरुआत ही कर रही है फिलहाल सेमीफिनाले के इतने एग्रेसिव नोट पे, तो मजा तो आ ही रहा है, बिकॉज देखिए एक्सपेक्टेशन से परे हट के गेम प्ले नहीं है. मैं सरप्राइज नहीं होगा गॉडलाइक के इस गेम प्ले से. गॉडलाइक एक्चुअली लव्स टू परफॉर्म द वे दे आर परफॉर्मिंग राइट नाउ. इन द स्टार्ट दे लव टू गिव द ब्रीफ बफर टू द एनिमी, एंड आफ्टर दैट वंस दे लेट्स से स्टार्ट टू क्लाइम इन द लीडरबोर्ड, दे आर क्लाइंबिंग इट वेरी स्विफ्टली. आप देख सकते हैं इस समय 133, 134 और इसी तरीके से 135, 106 प्लस पॉइंट्स गॉडलाइक निकालती दिख रही है. एनालिटर यहाँ पे समन कर लिया गया. वन ऑफ दोज अमेजिंग गन, वन शॉट वन किल का सिनेरियो रहता है. एनालिटर के शॉट्स में देखना चाहूंगा, कुछ क्विक सोप्स भी देखना चाहूंगा. फिलहाल अभी कोई डील की यूज यहाँ पे नहीं कर रहा है, ना ही कोई लोकस यूज कर रहा है, ना ही कोई लेट्स से राइटेक एएमआर यूज करता हुआ दिखेगा. सो फिलहाल स्नाइपर्स की कमी तो मुझे महसूस हो रही है, बट एनीवे जो भी चीजें यहाँ पे हैं, जो भी गन्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, दैट इज प्रीटी मच ऑन पॉइंट. गॉडलाइक की बात करी जाए, ट्रंक्स देखिए काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं. अगर बात करी जाए लर्न की, वो 20 किल्स कर चुके हैं. वही वेगस की तरफ से 21 किल्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बहुत एक अच्छा मैं कहूंगा एग्रेशन निकल के आ चुका है. बहुत कुछ अमेजिंग पॉइंट्स वो टीम्स यहाँ पे बिल्ड करती हुई दिखेगी. गॉडलाइक इज ऑलरेडी हैविंग द लीड. क्लॉ लेके निकल चुके हैं लर्न यहाँ पे, किसी को मौका नहीं देंगे. हूएवर कम्स इन फ्रंट ऑफ दिस गाय,
he is gonna get banished from the lobby, and that's what is happening. Claw with that beautiful synergy of Learn and Claw, I believe the synergy is working out. The game is working out for them. Neutrino on the other corner manages to bag some frags as well, but apart from that, you guys know this is the battle for the hardpoint. This is the battle of control. Can they actually control the hardpoint? That is the biggest thing right now. NS is once again bagging the hardpoints. They're trying their level best to counter it, but apart from that, GodLike manages to go ahead and once again push forward. Oh, that shot he would have been worked quite swiftly, but eventually वो aim, वो प्रिसाइजनेस कहीं कहीं निकल के नहीं आ पाई, वो प्रिसाइज शुड आई से शॉट्स हमें देखने को नहीं मिल पाए, बट एनीवे दे आर डूइंग द जॉब, नो डाउट इन दैट. एक अच्छा कंटेस्टमेंट, एक अच्छी फाइट हमें जरूर से देखने को मिल रही है दोनों टीम के बीच में. एनएस की अगर बात करी जाए, देखिए फिलहाल CBR4 का इस्तेमाल, लेकिन ग्रेविटी वोटिंग्स गन हैज बीन यूज्ड. लुक एट दैट, द शॉट्स ऑफ गॉडलाइक आर नॉट स्लोइंग डाउन. 183 पॉइंट्स, गॉडलाइक ऑलरेडी एक अच्छी लीड के साथ आगे बढ़ती हुई दिखेगी. लिटरली द लीड इज ऑफ 100 पॉइंट्स. 100 पॉइंट की लीड यहाँ पे निकल के लेके जा रही है गॉडलाइक. क्या यहाँ पे एनएस कुछ काउंटर करेगी? लुक एट ट्रंक्स, ही इज बीइंग अ बीस्ट. 5 kills, that means a frenzy coming from godlike Trunk. That is absolutely amazing, man. Neutrino, oh, that annihilator shot was absolutely amazing, but Neutrino fails to connect the shots from the right and exactly gets taken down. Apart from that, NS manages to bag out a little bit of a point from the hardpoint owning. Well, let's see how much more they can actually deal with this. 91 points from team known as NS Official. Well, of course, NS Seoul are trying their level best to gain some good points. Can they actually do it? That's the biggest question coming up. If we talk about NS, Terrace is there on the back foot, trying their level best to gain the momentum. हालांकि दिक्कतें हो रही है guys, no doubt on that. वो momentum निकल के आएगा या फिर नहीं आएगा, वही हमें यहाँ पे देखना है. किस तरीके से बैलेंस करते हैं इन सिचुएशंस को, वही हमें यहाँ पे चेकआउट करना है. बट गॉडलाइक इज वेरी क्लोज टू टचिंग द 200 marker, and when it comes to NS, they are constantly trying their level best to take that tug of war and become the one favorable team right now, but that's not working out for them. Apart from that, Learn, look at that Switchblade walks in the favor of Learn, just like that manages to take one down. NS facing a lot of wrath coming from team Godlike, and Godlike is being just chaotic. They're just trying their level best to attack and gain a lot more point at this moment. NS Seoul are in trouble. दिक्कत बढ़ चुकी है उनके लिए. 200 पॉइंट का आंकड़ा फिर भी यहाँ पे Godlike को टच करने नहीं दे रहे हैं किसी भी तरीके से. अपनी इस चीज को बिल्कुल बरकरार रखेंगे, बट Learn जो कि हाइड आउट में थे, थोड़ा सा बचे हुए थे फिलहाल, एज को पकड़ के बैठे, उन्हें टेक डाउन किया जाएगा. टेनिस की तरफ से भी शानदार टेक डाउन यहाँ पे देखने को मिलेगा. आप देखिए पलक झपकते ही, जस्ट इन अ लेट्स से blink of an eye, things are changing, people are getting countered, but Godlike is having 210 points, 40 more to go, and then they will become the winner of the first of the best of 3. So best of 3, पहला मैच सर्च एंड डिस्ट्रॉय. अभी जो इसके बाद आएगा वो देखने को मिलेगा. पहला मैच जो था वो फिलहाल हार्ड पॉइंट का देखने को मिल रहा है आपको. हार्ड पॉइंट का आप ऑलरेडी देख सकते हो, काफी अच्छा काउंटर यहाँ पे एस्टैब्लिश कर रही है टीम गॉडलाइक, एंड गॉडलाइक इज एक्चुअली हैविंग इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रबल राइट नाउ, बिकॉज एनएस उनको ज्यादा पॉइंट निकालने दे नहीं रही है. 216 या फिर लेट्स से 196 के पास से जो स्कोर है वो गॉडलाइक के लिए ज्यादा बढ़ नहीं पाया है. दो हार्ड पॉइंट बीत चुके हैं. गॉडलाइक सिर्फ यहाँ पे आई गेस 20-21 स्कोर यहाँ पे उठा पाई थी, तो 20-21 पॉइंट्स उठा पाई थी हार्ड पॉइंट के अंदर. बट अब धीरे धीरे करके गॉडलाइक ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया. लुक एट दैट, गॉडलाइक इज बीइंग फ्लुएंट इन इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, एनएस वंस अगेन bags the hard point in their favor, and look at that, they're gaining the points, they're trying their level best, and oh man, Dangla, that was absolutely an amazing shot coming from his corner. Apart from that, Cleverly also comes up with a beautiful blow. He is once again managing his level best, trying his level best to be honest, to attain the points in his favor. But Godlike bounces back. Neutrino with a blow coming from straight 6, manages to put one down, bags the victory in that particular perspective. 227 points coming from Godlike. NS Seoul, they are looking sharp for now. Well, they of course gaining the points. कोशिश जारी है, points उठाते हुए दिखेंगे. बिल्कुल यहाँ पे एक अच्छा खासा मैं कहूँगा synergize moment यहाँ पे देखने को मिल रहा है टीम NS के लिए, लेकिन hard point से थोड़ी देर के लिए एम्प्टी देखने को मिला. Well, Godlike once again gains a point. 20 more to go for Godlike, if I'm not wrong. 21 points to be precise. 229 points. Godlike is looking good enough, but look at that. Trunk knew that a jump shot will come in, and he delivers it quite beautifully. But apart from that, another shot from Deong's corner was absolutely brilliant. Learn pushes forward. Learn is here to gain the points, but fails to do so. Apart from that, next hard point has to be convoluted. Can it be Vegas gaining the points? Yes, of course. The claw comes in. The damage comes in. The carnage is there right now. Look at that. Vegas the beast is not letting anybody cross over it. 240 points. Well, Godlike is very close to the victory. They are tasting it. They are feeling it. They are feeling it. I'm feeling it right now, guys. The nerves are racking. Look at that. 247 points. 248, 249, 250, and there we go. The first match of the semi-finale already winds up, and it is in the favor of Godlike, the Guerrilla squad, the dominator, the attacker, the one which is easily gaining the points in their favor. That's absolutely amazing. The way they are actually doing it was absolutely amazing. Beautiful synergy worked out for Team Godlike, no doubt in that. As you can see that semi-finale is won
the first match of the best of 3 goes in the hands of GodLike. A beautiful, a brilliant, a devastating blow to Team NS Seoul. But let's see what NS Seoul does in this next upcoming matches, because now it's going to be search and destroy, if I'm not wrong, and the map is going to be very ample. Let's see how Team NS Seoul is going to play. And before that, we are going to get the replays so that you can actually know what will happen and how it happened all together. So yeah, replays coming in front of you. Look at that. Learn. Tried at level best to actually gain some good points, but वहीं न्यूट्रिनो की अगर बात करें, उनकी M16 काफी अच्छे तरीके से वर्क करती दिखी. न्यूट्रिनो कई मोमेंट्स में ऐसा भी हुआ कि उनको टेक डाउन किया गया, कई मोमेंट्स में न्यूट्रिनो के लिए दिक्कतें बढ़ाई गई, बट when न्यूट्रिनो ट्राइड टू बाउंस बैक ही डिड, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकल के आए वहाँ पर. फिलहाल आप देख सकते हैं गॉडलाइक ने जो शुरुआत यहाँ पर निकाली थी आज के दिन, काफी बढ़िया देखने को मिल रही है. लेकिन पहला मैच अभी ओवर हुआ है, नेक्स्ट अपकमिंग मैचेस में और भी चीजें चेंज हो सकती हैं. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि किस तरीके से नेक्स्ट मैचेस में अपनी गेम को निकालते हैं, किस तरीके से नेक्स्ट मैचेस में अपने पॉइंट्स को ये लोग एक्चुअली डेवलप करते हैं. वो सारी चीजों पर हम बात जरूर से करेंगे. और जैसे कि आपने देखा, जो कंटेस्टमेंट वेगस ने यहाँ पे दिया, दैट वाज अमेजिंग. वेगस, oh, this claw shot was absolutely amazing. They just went in straight, dug the hole for NS, and let's say manages to bury them. But apart from that, Neutrino once again goes the fight. Terrace with that beautiful another shot manages to devour a lot of things. Apart from that, that frenzy kill was absolutely amazing. I failed to see the first few kills from that frenzy, but when it came, it was absolutely hard. Bashing for the team known as NS official. NS Seoul is actually having a lot of trouble. जैसा कि आपने देखा, हाईलाइट्स में आप चेकआउट कर सकते हैं. उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन उन्होंने यहाँ पे फिलहाल लास्ट में कुछ पॉइंट्स को उठाने की कोशिश करी थी. आई गेस क्लोज टू 160-170 पॉइंट्स के पास आ गई थी NS official, बट उनको लास्ट में काफी ज्यादा तकलीफ यहाँ पे फील हुई थी. बट before that, let's talk about the MVP. The MVP of this particular matchup is going to be GodLike. With the kill amount is going to be 40. That's amazing. The first match of the semi-finale was absolutely amazing. Now moving up ahead, let's talk about the scoreboard. And there we go. This is the scoreboard, as you can see. Let's talk about NS right now. Yes, of course, we know that they have lost. But as a caster, I would love to point out one thing, that either you win it or you learn from it. So this is the match from which NS Seoul has to learn something. This is the one fight NS Seoul has to learn and experience the blow that GodLike can actually showcase. So of course, that is the thing they have to put in count. Apart from that, Terrace with 30 kills, death amount is going to be 34. And apart from that, when it comes to the assist, he had 12. He's the MVP for Team NS Seoul. When it comes to GodLike, well, we all know he's the MVP. That's going to be GodLike's Learn with 40 kills, 26 deaths, and 10 of the assist point with a score of 5,008. That's lovely. This is how the first match is going to wind up. Now coming to the next match, coming to the second match of the, should I say, well, indeed, guys, well, I guess we are going to take a short break, and after that, we are going to witness the second match for the day, which is going to be the semi-finales second match, where NS official once again will be trying their level best to counter that lead that GodLike has made. So yeah, we'll see you soon in the next one after a short break.
वेलकम बैक वंस अगेन। आई गेस हमने सबने देखा पहला मैच गॉडलाइक ने किस तरीके से अपने हाथ में रखा। 5 मिनट का ब्रेक आई गेस आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा होगा, बिकॉज डेफिनेटली इस ब्रेक के बाद आपको देखने को मिलने वाला था दैट किस तरीके से कौन सी टीम आएगी वापस, बेस्ट ऑफ 3 के अंदर क्या सिचुएशन निकल के आएगी। बट आई गेस नाउ द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट एनी टाइम सून। वी विल विटनेस वंस अगेन द सेकंड मैच of the semi-finale one, which will be between Seoul and GodLike Esports. GodLike Esports bagged the first one, and as you all can see, the score was something like GodLike had 250 points, and the team known as Seoul had 155. I guess there was a buffer of 95 points, which was absolutely amazing. So yeah, Hacienda Hardpoint was absolutely brutally taken over by Team GodLike Esports. But can they bring back the glory for GodLike once again in the standoff search and destroy, or is it gonna be Seoul? We have to check out that. It's a best of 3, guys. So definitely, if GodLike wins the next one, it's gonna be end for Team Seoul, and they are gonna be out of this equation, particularly from the semi-finale. But when it comes to Seoul, I believe they are gonna give their best so that they can bag this one, and maybe they can be back in the game. So definitely, guys, उनकी तरफ से ये कोशिश रहेगी, उनकी तरफ से ये ट्राई हार्ड गन गेम देखने को मिलेगा कि किसी तरीके से हम खुद को वापस लेके आए गेम के अंदर, मे बी विल be able to bounce back. बट वहीं गॉडलाइक की बात करी जाए, देखिए गॉडलाइक ने ऑलरेडी एक पहला मैच जीत लिया है, सो ऑलरेडी सेकंड मैच जीतना उनका सबसे बड़ा मेटा बनने वाला है। अगर वो जीत जाते हैं डायरेक्टली ग्रैंड फिनाले का जो एक बोलते हैं गाइस, द टिकट टू द फिनाले विल बी ओपन फॉर टीम गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स। तो यहाँ पे वो चीज़ मैं देखना चाहूँगा किस तरीके से वर्कआउट होती है गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स के लिए। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि रोस्टर्स क्या है, तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर्स यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगे फॉर गॉडलाइक एंड द टीम एज नोन एज Seoul as well. So there we go, guys. The details are here in front of you by myself, by my side. GodLearn is there, Trunks is there, Buns is there, Vegas and Neutrino, Jord, the IGL, the mega mind behind this whole particular perspective is going to be there in the lobby, no doubt in that. Neutrino पिछले मैच में काफ़ी अच्छा खेलते दिखे थे भाई। अगर बात करी थी लर्न की, अगर बात करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खासा खेला था। उन्होंने भी एक अच्छी गन गेम का कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया था। वो MVP बने थे पहले मैच के, if I'm not wrong, with 40 amazing finishes. So that is something which he has to boast of. Apart from that, when it comes to Seoul, it's going to be, there is Do Young and Dangla is there. Cavalry is going to be there. SN1 is there. And S1, well, they tried their level best, but eventually the lead that GodLike maintained was absolutely amazing. For a brief time period, लगा था कि GodLike वो लीड को यहाँ पे खवा देगी, लगा था कि GodLike को यहाँ पे कंटेन कर लिया जाएगा, but at that same exact moment, what happened? Seoul, to be precise, came in, swooped that situation, and were trying their level best to actually gain some good points. 2 हार्ड पॉइंट उन्होंने यहाँ पे कवर जरूर से किया था अपने फेवर में, बट गॉडलाइक की तरफ से वो ट्रेड यहाँ पे लिया गया, एक शानदार टेक डाउन यहाँ पे जरूर से देखने को मिला था, एंड इट वाज क्वाइट गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि हमने बात की थी गाइस प्राइस पूल की, इट वाज 10,000 rupees, एंड the champion are going to get 4,000 rupees. The second position is going to get, if I'm not wrong, 2,000 rupees, and the third position and fourth position will get 1,000 rupees. And if I talk about the position coming from, I guess, 5th to 8th, they are going to get 500 rupees each. The team will get 500 rupees each. Apart from that, there is no prize for the MVP, but yes, of course, guys, 10,000 rupees in this time period is absolutely amazing. This is Icebreak Series 2. We all know the contestant is for real. Semi-finale का पहला मैच ऑलरेडी ओवर हो चुका है। Semi-finale 1 का पहला मैच जो है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। Now we are waiting for the semi-finale 1 match number 2, which will be in the I believe search and destroy mode, and it will be absolutely amazing to see that किस तरीके से पूरा गेम निकलता है। स्टैंड ऑफ का वो मैप देखने को मिलने वाला है। पहला मैच ऑलरेडी ओवर हो चुका है, जिसमें गॉडलाइक ने अपनी लीड को 95 पॉइंट से काउंटर यहाँ पे किया था। थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ेगा, and after that the match will start. You have to wait a little bit more longer, but guys, make sure to actually tune in, share as much as you can. But right now, guys, we are ready to dive into the match. We won't wait any longer, and directly we'll dive into the match. Let's see what happens in the search and destroy. But before that, look at the teams which are going to face off each other. That's going to be Seoul versus GodLike Esports, and there we go. The GD Esports presents Icebreak Series 2 Semi-Finale 1. Match number 2 is about to start, and it's search and destroy, and it's Seoul versus GodLike. Let's see what happens. देखते हैं क्या होता है। टारगेट रहेगा 7 राउंड्स को जीतने का, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 6 राउंड के बाद आप जानते हैं साइड स्विच हो जाती है। अटैकर्स से अगर बात करी जाए तो अटैकर्स रहेंगे Seoul, और इस समय डिफेंडर्स बनते हुए दिखेंगे GodLike के खिलाड़ी। Well, of course, well, there we go. They are trying their level best. I believe GodLike is the one who is attacking right now. They are trying their level best to plant the bomb. Learn is there on the back foot, and Seoul's Dayong, the last man standing, gets spotted. Sprays are there, the damage is there, but still he survives. That's good enough. वो survive कर रहे हैं। बट वहीं अगर लर्न की बात करें जब वो करंटली जा सकते हैं आराम से बॉम्ब प्लांट करने के लिए, लेकिन देखिए गॉडलाइक देखते ही देखते पहला ही राउंड निकाल चुके अपने नाम, एंड GodLike is back again in the game. They are showcasing the strength they did in this Hardpoint, and search and destroy में भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। लर्न की बात करें जाए, once again I believe Learn is going to be the bomb planter. Okay, it's Burns this time.
क्रिक 6 उनके पास देखने को मिलेगा, कुछ नीड्स कुछ फ्लैश यहाँ पे जरूर से डाले जाएंगे और आप देख सकते हैं शुरुआत से एक अच्छा प्रेशर बनाने की कोशिश. Terrace is on the backfoot. Terrace can be getting spotted and there we go. Vegas manages to put him down with the DLQ 33. Amazing one, no doubt in that. Another spray comes in. Oh, Dangla manages to take the trade, but the trade coming from Trunks was absolutely amazing. Got like 3 people surviving and his 3 were surviving as well. So definitely दोनों teams एक same page पे आ चुके हैं. Definitely दिक्कत उनके लिए बढ़ती हुई दिखेगी. It's gonna be a huge hectic fight coming from the corner. So let's see how they're going to bounce back. But before that, Do Young gets taken down by Neutrino. What a beautiful blow of that guy. Neutrino is still waiting for the right moment to strike on. When it comes to Clevelry, he has got the upper edge, he has got the height advantage, but can he actually cherish this height advantage? That is the biggest thing. Because देखिए हाइट पे रहना कहीं ना कहीं आपको भी काफी ज्यादा विजिबल कर देता है, और वो भी यहाँ पे हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, एक 1 फ्लोर ही हाइट देखने को मिलेगी, बट क्लेवलरी इस हाइट का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे. वेगस को पुट डाउन करेंगे, गॉडलाइक को फिर से सेम पेज पे लाएगा. और लुक एट दैट, लर्न द स्नीकी गाय. Nobody knew that वो किस तरीके से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं. फिलहाल कोई आइडिया नहीं था क्लेवलरी को उनको टेक डाउन यहाँ पे कर दिया जाएगा. Now it's all about the last man standing. That's gonna be, oh man, Neutrino before that gets connected from SN1. That's interesting. Now it's a 1v1 type of scenario going up. Well, I guess GodLike has to go ahead and plant the bomb, and they are trying their level best to do that. But before that, the bomb gets cancelled. Once again, he is actually reaching for the bomb to get planted. Well, I guess now this time he's going to be successful. And yes, of course, the bomb has been planted. 45 seconds more to go, and after that, the bomb will go kaboom. And NS official will be out of this equation in the round 2 as well. But what happens? Let's see. NS official, can they bounce back? I'm looking for it. I'm scouting for it. And there we go. The shots are about to be here anytime soon. That DLQ will work in his charm or not. The spray comes in. The damage is there for real. Apart from that, shots were there. But no, he won't be successful in it. And NS once again lost the second round. And the target is of 7 rounds. GodLike has to go for 5 more. And NS official, well, they have to start off right now. The start is still not there. NS Seoul's have to gain some good points. Can they actually do that? NS Seoul's trying their level best to actually manage and bag some good points. Can they do it? That's the biggest question. Look at that. The needs are there. Trophy system has been appointed. Some shots being taken down. The shots are being exchanged, but the connection is still not coming. Fights are still coming up for the couple of minutes. These are, oh, Vegas. I thought Vegas will be able to fetch that a takedown, but Vegas was taken down. Apart from that, Team NS is not looking that great right now. Same goes for GodLike as well. They have also lost 2 good men of their team. And apart from that, when it comes to NS, same goes for them. 2 good men down to the rust. 3 remaining, trying their level best to maintain this energy and maybe bring back the glory for the team. This is the match. This is the round, guys. You should remember, where maybe NS official will have a chance to fight for the 3rd one. But I don't think so. It's going to be easy. As you all can see, GodLike is still maintaining their lead of 2 rounds straight up, and NS official, NS Seoul to be precise, has to start off. But Clevelry gets taken down. Now I guess his position is pretty much revealed. I guess GodLike has predicted where this guy is going to pop up from, and they are managing to back that, let's say, kind of fight. Shots coming from SN1. He's revealing his position as well, if I'm not wrong. उनकी पोजीशन रिवील हो चुकी है, जो कि उनको एक बहुत ही ज़्यादा टफ स्पॉट में डालता हुआ दिखेगा. सो डेफिनेटली देखते हैं क्या सिचुएशन निकल के आती है, क्या वो एक्चुअली बाउंस बैक कर पाएंगे इस गेम से. That's what we have to check out. As we all can see, sufferings are there, disturbance is going to be there, takedowns is going to be there, and NS, well, Dayong manages to bag one more. That's interesting. Learn has been taken down, the MVP from the last match. Well, he has been taken down at this moment in this round particularly, but I believe they will be able to bounce back. There is a subtle amount of, let's say, carnage coming from Team GodLike. GodLike knows how to actually balance off the equation, but there we go. The spray comes in. Dio gets taken now. That's amazing. Another beautiful takedown being delivered. SN1 remains at large, but there we go. He also gets taken down. 11 minutes, 11 seconds to be precise were left, but before that, GodLike manages to wipe out the NS Seoul's. But now, oh man, GodLike is just dominating at this moment. GodLike is just trying the level best to attack and gain the points and manage, and should I say, head to bag that ticket to the grand finale of this Icebreak Series 2. Is it possible? I hope so. Neutrino, the beast, manages to get that beautiful sneaky pixel in his favor. Look at that, man. How beautiful Neutrino bags that finish. Apart from that, Clevelry with that DLQ also tries to move forward. Can he actually go for it? The needs were there, but the need didn't make any kind of connection. The splash damage was also not there. So now Clevelry is actually surviving, but spotted, gets taken down. GodLike once again is actually chasing. If I talk about Dayong, manages to actually put up a spray, manages to take one down. That's interesting. GodLike is also losing a player. That's going to be Learn. It was actually a tug of war between 2 guys.
और ये स्ट्रंग्स को यहाँ पे सबसे पहले जाके बॉम्ब प्लांट कर देना चाहिए, वो एक ज्यादा प्रेशर यहाँ पे बना देगा। वो लुक एट दैट, दायोंग बाउंसेस बैक, व्हाट एन अमेजिंग गेम। दायोंग यहाँ पे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए दिखेंगे। दो खिलाड़ी को वो डाउन कर चुके हैं। न्यूट्रिनो की बात करी जाए 150 जीएस लेके वो ऑलरेडी बैठे हैं। कैलामिटी जो है वो देखने को मिलने वाली है, बट बॉन्स की तरफ से SN1 को टेक डाउन किया जाएगा। दैट वाज अ गुड वन। क्रिक 6 का इस्तेमाल, एक अच्छा टेक डाउन यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड गाइस रिमेंबर टू लाइक, रिमेंबर टू शेयर, रिमेंबर टू सब्सक्राइब, बिकॉज वो आपका यहाँ पे कहने के धर्म बनता है इस समय। अपार्ट फ्रॉम दैट, न्यूट्रिनो well, dying with that shot. He manages to take him down. That's an interesting one. It's a 1v1 type of situation coming up. Definitely going to be a tough one. बॉम्ब उठाने की कोशिश यहाँ पे वेगस करते हुए दिखेंगे। मुझे लग रहा है कि वेगस इस मैच के अंदर काउंटर कर पाएंगे। थोड़ा सा टफ हो चुका है वेगस के लिए, एंड ये पहली बार हो रहा है इस पूरे के पूरे सर्च एंड डिस्ट्रॉय में जहाँ पे गॉडलाइक इस अनकंफर्टेबल स्पॉट में देखने को मिल रही है, जहाँ 1v1 की सिचुएशन देखने को मिल रही है। सो बस वेगस भाप के हर एक चीज को समझ के परख के अपने कदम रखते हुए देखेंगे। 24 seconds are more to go. He has to go ahead and plant the bomb. If he is unable to do so, it's going to be very bad for him. But there we go. He bags the bomb. He's going to go there. He's going to plant it, I believe, if I'm not wrong, on the B side. Let's see, is it going to be possible? Yes, of course, he's going for the bomb plantation. Yes, of course, the bomb is being planted, and he is successful in it. But on the other corner, he gets spotted. The sprays are there, but sprays are not enough to put him down to the knee. Apart from that, one more shot is awaited. Oh, look at that. A tough one. Spray comes in. Oh, man. GodLike lost this round particularly. That's for sure. Because now the bomb will be defused by Lion. That's easy. That's an amazing kind of, let's say, gun game coming from Team NS Seoul. And this is what we all were waiting for. The NS fans were waiting for, to see the comeback of NS. And yes, of course, now NS is popping it off. Now they're giving the comeback. Now they're showcasing that, yes, of course, we are also in the lobby and we are here to chase you out of the equation. But GodLike, can they actually let them go? Let them do this to them? I don't think so. GodLike will bounce back. That's the biggest carnage coming up right now. GodLike यहाँ पे फिर से कोशिश करते हुए दिखेगी। आप देख सकते हैं GodLike की तरफ से दोबारा से कोशिश करी जाएगी। वेगस SN1 को डाउन करेंगे। DLQ के इस्तेमाल से काफी सारा एक अच्छा खासा टेकडाउन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे उसी के साथ दांगला को भी टेकडाउन कर दिया जाएगा। NS ऑफिशियल अनकंफर्टेबल स्पॉट में GodLike इस बार बॉम्ब प्लांट करने में सबसे पहले अपनी बढ़त बनाएगी। और देखिए जिस तरीके से शुरुआत में एक प्रेशर यहाँ पे बना दिया, बट लुक एट दैट, दांग uses that tanks, I guess, spout and moves forward. Clevelry also gets taken now. It's all about Terrace and the other guy, that's going to be Dayang. Dayang managed to put one down. Remember guys, पिछले मैच में उन्होंने गेम को चेंज किया था, इस मैच में भी कुछ वैसा ही करते दिख रहे हैं। Oh, Neutrino, you have to do it, you have to do it, you have to go do it. Go for it, go for it, go for it. Waiting for the right moment, waiting for the right opportunity, but he didn't. He has not got that opportunity, and right now I believe, apart from that, some more shots are coming up, no doubt on that. Another takedown will be coming up soon enough. 150 GS is there. Can he actually go ahead and pop off the shots? That's the biggest question coming up. Look at the shots being delivered, and there we go. GodLike bags another one. Interesting one, no doubt on that. GodLike is having 4 points right now, and NSC also is having only 1. The target is of 7 points. That means GodLike has to go for 3 more rounds, and they have to win 3 more rounds. But if I'm not wrong, the side will switch in the next match, in the next round to be precise. And once the side gets switched, it will be a little bit more troublesome for Team GodLike. So yeah, definitely gonna be अमेजिंग टू वॉच आउट। अभी के लिए काफी ज्यादा मजा आ रहा है इस चीज को देख के फिलहाल NS सेल्स की तरफ से जो प्रेशर है वो लगातार बनता ही जा रहा है, वो लगातार उसी लेवल पे देखने को मिल रहा है। वो एक इन्फेक्टिव आई गेस फाइट हमें देखने को मिल रही है समय। बट न्यूट्रिनो को टेक डाउन किया जाएगा। इसी के साथ अगर बात करी जाए GodLike की, उनके प्लेयर्स गिरते जा रहे हैं। शॉटी का इस्तेमाल, लुक एट द ब्यूटीफुल शॉट कमिंग अप। दैट शॉट ही मैनेज्ड टू पुट अ बिग डेंट इन NS Terrace. And apart from that, some more shots, some more sprays, but no, Kirkshaw will not be there. Learn is completely going to fall back from that scenario because he knows if he stays all together in that area, sprays are going to be there, pre-fires are going to be there, and that's not going to look good in his skills. Apart from that, more and more shots coming up. The flashbang goes in. Oh yes, of course, the flashbang gets connected. Oh, he spots the guy. He was able to take him down. That's interesting. Now he has to just go ahead and plant the bomb. If he is able to do so, that will be absolutely lovely for him, I guess. Yes, of course, Buns is going for the bomb plantation. Yeah, he's pretty much successful in it for now. Okay, SN1 also gets taken down. Learn on the other corner managed to back the last one, just like that. GodLike is having 5 points. Now the sides have been switched. GodLike is now becoming the defensive team, and the bomb is actually going to get planted from NS's corner. So let's see what happens. NS official, NS Seoul to be precise, will they be able to plant the bomb? Will they be able to successfully devour a team known as GodLike Esports? Or GodLike is easily going to get their 2 points that they are needed to gain and manage to actually be there in the grand finals, because now ये वो मैच है जिसमें शायद वापसी मिलेगी NS Seoul को, या फिर यहाँ पे GodLike अगर इस मैच को भी ले जाती है तो वो उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पे देखने को मिलेगी for NS Seoul, if I'm not right. Neutrino and the other guy, that's gonna be, if I'm not wrong, I guess that was Trunks. Okay,
Yes, of course, people are trying to perform. Trunks, if I'm not wrong, is having the quick six, gets spotted from the cavalry, and just like that, gets taken. That was a beautiful blow coming up, no doubt on that. The anticipation, the energy, the synergy is absolutely on point. Dayong waits for more and more time period. Now Vegas becomes the last one. He's the only ray of hope for the team. Can he actually clutch it out altogether? Can he become the ace for the team? Let's see. Oh, spots one, takes him down, but no, won't be able to move forward. And with this, GodLike once again gives an opportunity to NSCLs, and now NSCLs, after having that opportunity, let's see how far they can head out, how far they can actually gain. That's the biggest question coming up right now. Looking forward to see what will happen, looking forward to see how the game is going to get attacked right now. जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूट्रिनो की बात करी जाए, डीएलपी थेरेपी का इस्तेमाल करके वो फिर से शॉट्स लेने की कोशिश करते हुए देखेंगे. शुरुआत काफी डिसेंट देखने को मिल रही है, नो डाउट ऑन दैट. एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छा मैं कहूँगा टास्क यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश यहाँ पे प्लेयर्स करते हुए देखेंगे. बट लेट्स सी हाउ मच मोर सक्सेसफुल दे कैन बी. वेटिंग फॉर द राइट शॉट टू गेट कनेक्टेड, still waiting, but the clarity of the particular shot is not coming up. Vegas on the other corner gets taken down. Interesting. Cavalry once again managed to bag up. Beautiful frag for the team. Apart from that, if we talk about NSN1, he's trying his level best to gain the points, but he's failing to do so right now. As you all can see, he's still waiting for that moment to exactly reciprocate the shots that are coming from Team GodLike. GodLike is actually having a little bit more trouble, as you all can see. GodLike के लिए यहाँ पे डिफेंडर बनना थोड़ा सा मुश्किल वाला ज़रूर देखने को मिल रहा है. एंड वही अगर बात करी जाए NS Seoul's की, they are being very dominant. So this round, things can change. Fights can change. The meta can be different. Look at that. Nobody is trying to move forward. Nobody is trying to actually, let's say, go ahead and gain the points. Everybody is being very dormant. Everybody is trying to be very decisive about their steps that they're going to take and eventually be very precautious about the fights that they're going to actually showcase. So yeah, let's see eventually what happens, because now trouble for team NS official is going to be there. NS Seoul has to go ahead and plan the bomb. That's the biggest task for that particular team, and the time is running out to be precise. Oh, gets spotted, takes one down. Can he take out the second one? Yes, of course he will. Trunks with a beautiful 1v2 coming up. That's was an absolutely amazing blow coming from the corner, but Cavalry managed to bag one more. Trunks gets taken down. The another one is about to go down, I believe. Shots are being very chaotic as well. Can see Neutrino on the other corner also tries his level best to survive a bit more. Burns on the other corner, waits for the right moment to strike on. Spots one guy. Can he actually clutch him out? Oh yes, of course. The fight gets taken down. Cavalry, last man standing with that 0.50 GS, tries to push forward. Spots one, takes one down, has to plant the bomb. Oh, he does. Oh, he does. That was absolutely amazing. He bags the fight in his favor. Now 8 rounds have passed. GodLike has bagged 5 rounds, and when it comes to NS Seoul, they have only got the 3 rounds. But slowly but slowly they are catching up. That's amazing. GodLike, can they actually get the second 2 rounds? We have to check it out. अभी के लिए तो वहाँ पे देखिए दिक्कतें जरूर से देखने को मिल रही है GodLike के लिए. GodLike को उस प्रेशर के साथ निकल के नहीं आ पा रही है जिस प्रेशर की हम बात कर रहे थे फिलहाल. शुरुआत में जो उन्होंने प्रेशर बनाया था वो प्रेशर अब टूटता दिख रहा है इस समय. So I'm actually rooting for GodLike that they are once again gonna be that chaotic that they were in the first few moments. So we'll have to see what happens and how the game is gonna go on. Is it possible for GodLike to actually gain the point, or is it going to be something else coming from Team NS Seoul? Because right now NS Seoul, after becoming the attacker, they're being very should I say pushy and trying their level best to gain the points. Look at that bomb. Well, who is going to plant the bomb? I can't see the bomb right now. Okay, I guess it is already planted if I'm not wrong. Yes, of course, the bomb has been planted. Apart from that, when it comes to GodLike, they have to go ahead, push forward, attack, but they're failing to do so. Look at that, the last man standing. Burns becomes the only guy which is still surviving, and Burns also gets taken now. It's a 4v5 coming up. Well, special forces are catching up. That means NSC also is catching up, and GodLike, you have a lot of job to do right now. Shorty coming from Burns corner. Shorty is there, and apart from that, we also have the other beautiful gun that's going to be Click 6. Bomb planted 3 times by Burns, bomb defused 0 times by Burns. So definitely, right now, Burns has to work on defusing the bomb, work on the attacking the area to be precise. But apart from that, look at that, Trunks waiting for the right moment to strike on. Yes, of course, Trunks can actually go ahead and get this fight in his favor if I'm not wrong. But there we go, one more guy from Team GodLike gets taken down. Another one from GodLike has been taken down. That's interesting. Learn from the back foot. Tries to push forward. Let's see how much more success they can actually attack with. Oh, the spray. Trunks also gets taken down. I don't know what is happening to GodLike, but they're feeling like a clash of clans right now. Well, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बढ़ चुका है GodLike के लिए. देखिए, क्योंकि अगर यहाँ पे बराबरी कर ली किसी भी तरीके से NS ने, तो फिर वहाँ पे गेम जो है वो काफ़ी टफ निकल के आ जाएगा बाय द पर्टिकुलर टीम नॉन एज NS ऑफ Seoul. और देखिए, NS Seoul यहाँ पे गेम को बिल्कुल चेंज करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है, मेटा को बिल्कुल एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है. और इसी के साथ न्यूट्रिनो द जॉर्ड इज एक्चुअली द लास्ट मैन स्टैंडिंग. Spots one, fails to connect. He's just waiting for the right opportunity to connect the shots. I don't think so इतना आसान होने वाला है. I guess ये 5v5 का मैच हमें देखने को मिलेगा for sure. I guess we are going to move up to the 5v5.
एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम खेलती हुई दिखेगी समय गॉडलाइक। सरप्राइज हूँ बिकॉज देखिए गॉडलाइक के लिए सबसे बढ़िया जो मैच उनका निकल के आता है वो सर्च एंड डिस्ट्रॉय का ही देखने को मिलता है, बट अभी वो चीज़ें निकल के नहीं आ पा रही है। दैट इज एक्चुअली कमिंग अप एज अ सरप्राइज फॉर मी. Neutrino, well, he has to push forward. He has to do a 1v3. Can he actually go for it? Yes, of course, he goes for the shot, but no, he fails to connect. Terrace managed to back him out. And just like that, it's a 5v5. Godlike once again is getting phased off. Godlike is getting the troublesome attack on their faces right now. If it goes to the overtime, that will not be lovely for me as well. Because guys, overtime देखिए कहने के एक sense of होप क्रिएट कर देता है हमारे ऊपर, एंड वो होप अगर टूट जाए ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता फॉर मी एज ए गाइस। आई लव टू सी एक वन साइडेड यहाँ पे कहने की डोमिनेशन भी देखने को मिले, कुछ अटैकिंग फॉर्मेशन हमें हमारे देखने को मिल रही हैं। बात करी जाए ट्रंक्स की तो देखिए उनको टेक डाउन यहाँ पे कर लिया जाएगा। गॉडलाइक के लिए फिर से कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। गॉडलाइक इज फेलिंग टू कनेक्ट दो शॉट्स, बट एनएस के साथ भी इस बार दिक्कतें बढ़ रही है। एनएस के यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं दायांग, उनकी तरफ से सबसे पहले बॉम्ब प्लांट यहाँ पे किया जाएगा, बट केवलरी को यहाँ पे टेक डाउन कर दिया जाएगा। क्लेवरली को टेक डाउन कर दिया जाएगा precisely. But when it comes to LeRRUN, the choice shots, oh look at that, Dangla gets taken down just from the backside with a beautiful nade of LeRRUN. But moving up ahead, GodLike is being carnage as well. GodLike, can they bounce back? That is the hope for now. Terrace manages to bag one. Dalang also manages to bag one. It's a 2v2 situation coming up. The bomb is already planted. Definitely it's going to be a very hectic fight for Team GodLike. Spots one. Well, there we go. Godlike is about to, I believe, defuse the bomb. Can they actually go for it? 12 more seconds to go. They are trying their level best. And yes, of course, Vegas is going to defuse the bomb. And finally, successfully, Godlike bags the 6th round in their favor. And now one more to go for Godlike. Otherwise, if NS Seals manage to bag the 6th round for themselves as well, it will be overtime coming up. But I don't think so it's going to be that easy to get the overtime, because Godlike is here to taste the victory. Godlike is here to get the card for the grand finale, and I believe they are actually working on it. So let's see how the work is going to get paid off. Apart from that, the shots are still there. Look at that one guy. Terrace gets taken down from the beautiful close of Vegas. It was a DLQ 33 shots. Tangna managed to put one down. That's going to be Burns with that Switchblade. Oh, the KRM262 works quite beautifully, as you all can see. A beautiful backlash, a beautiful takedown indeed. LeRRUN on the other corner. Let's see how he's going to push through, how he's going to gain the points. Well, Godlike, they are not the attackers. They just have to avoid the attackers attacking in front of them. LeRRUN waiting for, with that KRM, waiting for that moment to just scoop the frag out of it. But is it going to be that easy? Well, Cleverly is coming up in the baiting area. Well, that can be troublesome. Yes, of course, the shot comes in. The shot fails to connect. Now he's actually moving up on the another angle. SN1 waiting for the right moment with the same gun that Burns, if I'm not wrong, was using. Apart from that, Cleverly, shots are going on, but नॉट कनेक्टिंग। अभी वो कनेक्शन निकल के नहीं आ पा रहा है, वो मैं कहूँगा टकरार देखने को नहीं मिल पा रही। दोनों खिलाड़ी यहाँ पे कहने के काफ़ी ज़्यादा डॉर्मेंट देखने को मिलेंगे। वहीं क्लेवरली की बात करी जाए, उनकी एचपी काफ़ी कम है, वो फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। वो फिर भी काफ़ी विजिलेंट है अपनी इस चीज़ को लेकर। वो जानते हैं कि फिलहाल छोटी सी एक गलती करी तो यहाँ पे दिक्कतें काफ़ी बढ़ सकती हैं उनके लिए, इसलिए वो काफ़ी अच्छे तरीके से गेम को आगे अपने एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। सही मौकों का वो इंतजार कर रहे हैं, बट वो मौका मिलेगा कैसे? दैट इज द बिगेस्ट थिंग। ओह, SN1 gets taken down by the Trunks. Krieg 6. Now it's all about the last man standing. Cleverly, the only ray of sunshine for the team. Bomb has been not planted yet. The time is running out. 20 more seconds to go. And after that, the time will run out. So let's see what he can do. Goes for the shot. Gets a long shot. Gets a one kill. Can he go for the second one? I doubt it. Oh, yes, of course, he goes for the second one. Now the third one. Is it going to be the possibility, or is it going to be the last and the final match in the semi-finale for GodLike? We have to check it out. Look at that. Shot goes in. Fails to connect it. Apart from that, on the shot. And just like that, GodLike bags back-to-back. 2 good matches of the best of 3. And this is how GodLike is going to move in the grand finale, as we were talking about. What an amazing gun game. What an amazing brilliant showdown coming from Team GodLike's corner. Well, for a brief time period, I thought GodLike won't be able to capsize on this particular fight, but in Seoul's, man, they lost it. They have to learn a new strategy. They have to learn a new, let's say, game sense, and then eventually bounce back. And I believe they will be able to do so, because they are actually proving themselves in the 5 matches that they won, 5 rounds that they won. They proved themselves exceptionally well. वहीं पे अगर मैं बात करूँ टेरिस की, या फिर if I talk about Dalang and when it comes to Cleverly as well, these 3 players exceptionally performed quite well in the game. But when it came to GodLike Esports, वो synergy कहने के देखने को मिली है. But moving up, let's talk about the replay so that we can witness that what happened actually in the game, and those highlights will actually showcase us. There we go. This is the carnage that I was talking about from LeRRUN's corner. Look at that. Cleverly was actually having a beautiful upper range, but this is how the first and second round went in the favor. Apart from that, and the spray came in, and Team NS
देखिए जब 4 पॉइंट कहने के निकल के आ चुके थे, 4 राउंड जीत ले गए थे गॉडलाइक के बाद से, उसके बाद से एनएस ने जो पेस पकड़ा वो कहने के काफ़ी अमेजिंग था। एनएस जब से अटैकर बनी उसके बाद से एनएस ने काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट्स को गेन करना शुरू किया। देखिए गॉडलाइक के खिलाड़ी वेगस ने एक को डाउन किया, लेकिन तुरंत ही उनको भी यहाँ पे नेट के थ्रू टेक डाउन यहाँ पे कर दिया गया था, तो वो चीज़ कहने के अपने आप में काफ़ी अच्छी निकल के आई। गॉडलाइक ने फिर से कोशिश करी कि वो बाउंस बैक करे, गॉडलाइक ने फिर से कोशिश करी कि वो कहने के पॉइंट्स को उठाएं, लेकिन गॉडलाइक ने जो लीड बनाई थी वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी थी। 5 वर्सेस 5 का स्कोर देखने को मिला। एंड उसके बाद एट लास्ट के जो राउंड थे उसमें गॉडलाइक ने अपना गेम दिखाने की कोशिश करी। उसमें गॉडलाइक ने दिखाया दैट वी आर द वन हु इज गोना बी द चैंपियन। लुक एट दैट, गॉडलाइक के जो शॉट्स से कितने ऑन पॉइंट थे, बट क्लेवलरी की मैं दाद देना चाहूंगा, क्लेवलरी अपने आप में बहुत अच्छा खेले। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट वाइटल प्लेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर मैचअप, जो कि था सच इन डिस्ट्रॉय मोड में। इट वाज गॉडलाइक स्ट्रंक विद 12 kills. He was the one who manages to push forward, who manages to back down the victory for this team known as GodLike, and that was absolutely amazing. Let's moving up ahead, talk about the scoreboard to be precise. So देखते हैं guys scoreboard में क्या सीन यहाँ पे निकल के आता है। अगर बात करते हैं सबसे पहले Seoul की, the one who lost this semi-finale, well they had the MVP known as Do Young, who had 15 kills, 2 plantation of the bomb and 1 diffusion of the bomb. And apart from that, when it comes to GodLike's reign of terror, it was Trunks with 12 kills, 0 plantation, 0 diffuses. He was just all gun blazing. He went out and gathered as many as frags he could do. That was amazing, no doubt in that. His score is looking decent with 1549 points in his favor. That was absolutely amazing. A beautiful gun game coming up. Although the score of Doyoung is pretty much higher than this guy, but yeah, still the MVP is gonna be GodLike's Trunk. This is how the game gets winded up, and now the best of 3 in the semi-finale one is pretty much over, and you can check out that GodLike is the one who is actually going to bag this one and go ahead in the grand finale. Well, grand finale is going to be best of 5, but before that guys, all of the details will be forecasted for you. But before that, we are going to take a short break, and then we'll be back again on the desk. The CODM arena. It's absolutely amazing to see that how the game is going on in the semi-finale one. But right now guys, as we all know, the GodLike is the one who is going to move on to the grand finale. Semi-finale one is pretty much over. It was between GodLike versus Seoul. A quick recap for you guys. GodLike won the first match, that was Hardpoint, with a buffer of 95 points, and when it came to the second one, that was Search and Destroy. In that particular perspective, and it gave a tough competition, but GodLike once again won it with a brief buffer of 2 points. Now moving up ahead, let's talk about the brackets of the second semi-finale of the day. So yes, of course, semi-finale number 2, the brackets are in front of us. It's gonna be between NorthKings versus Memoria, and the winners are going to move on to the grand finals and face off team known as GD Esports. Well, it's gonna be a little bit more difficult, but let's see how the game is gonna go on, how the performance is gonna be there. And before that, let's talk about the map veto. Let's see
which are those maps which have been preferred by these guys, and eventually what is the statistics. And there we go. The map is going to be Hacienda. The point, or should I say, the mode is going to be Hardpoint. Map number 1 is going to be played in that particular arena, and apart from that, when it comes to the second match, it's going to be standoff in the mode of search and destroy, and takeoff control will be the last one. I don't know how the situations will be getting carried out. I want to see a, let's say, tug of war between these three guys, between these three maps as well. The teams are actually going to perform exceptionally well, no doubt in that. मेमोरिया और नॉर्थ किंग्स दोनों की अगर बात करी जाए, अपने आप में एक अलग मेटा लेके चलते हैं. इसमें मेमोरिया की अगर बात करी जाए, थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव बनने की कोशिश करती है और थोड़ा सा ज़्यादा मैं कहूँगा प्ले अलॉन्ग द वे यहाँ पे देखने को मिलता है उनकी तरफ से. कुछ वैसे डिसीजंस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं. सो डेफिनेटली ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग टू गेट कंसिडर. बट आई एम वेटिंग फॉर द मैच टू गेट स्टार्टेड. वेरी सून द मैच विल बी स्टार्टेड. वेरी सून यू विल सी हाउ द कार्नेज इज गोइंग टू गेट फोरकास्टेड, एंड आई बिलीव इट इज गोना बी मेमोरिया वर्सेस नॉर्थ किंग्स. जैसे कि हमने पहले भी बात करी है, दोनों टीम्स अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगी. गॉडलाइक वर्सेस सेओल, वेल वो मैप का जो अभी तक एक छवि है, वो मैच की जो शैडो है वो अभी तक यहाँ पे दिमाग पे चल रही है. बट आई गेस इट्स प्रीटी मच ओवर. बट नाउ मूविंग अपवर्ड इज गोना बी बिटवीन मेमोरिया एंड नॉर्थ किंग्स. सो देखते हैं फिलहाल Memoria versus NorthKings, what is going to happen between these two giants, how they are going to perform. We are waiting for the match to get started. Once again, when the match will be started, we'll witness the Hardpoint as the first match. Well, again guys, as you can see, Memoria versus NorthKings, two good teams. Moving up ahead, let's talk about the roster, because that's actually very important. Moving up ahead, from NorthKings is going to be Nariman, Al Pacino. Apart from that, there we go. We have Dark Dream, we have Minazuki, Daddy OPS, and these are the 5 guys which are going to perform for Team NK. That is NorthKings. NK Wolf is also going to be there for sure. Apart from that, when it comes to Memoria, it's going to be Mango, Baller, Ren, Xian, and Loki Trash. Well, Loki Trash is there. That's interesting. Loki Trash. I remember this guy. I've seen him perform exceptionally well. Yeah, well, of course, we are ready for the match to get started once again. When the match will be here right now, we'll witness how Loki Trash and his teammates from Memoria are going to perform. Icebreak Series 2. Semi-finale 2 is already started. Look at that. The counter is coming up. In just 5 or 6 seconds, we are going to witness the carnage coming up. Let's see how the fights are going to be there. Baller with that. PP19 Bison. Well, that's interesting. I have not seen this gun being used a lot, but I believe VP19 Bison with that superior amount of ammo is already going to give you a head start. Loki Trash comes up with a frag. Let's see how he's going to perform in that area. Hardpoint has to be covered up. It is all being started by NorthKings. 1 point is there from NorthKings corner, but Memoria managed to bag again. Memoria is coming up with some brutal points in the hardpoint. Yes, of course. पॉइंट्स गेन कर रहे हैं, लगातार अपने प्रेशर बनाते जा रहे हैं, बट उस प्रेशर को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश नॉर्थ किंग्स भी यहाँ पे करते हुए दिखेगी. और लीजिए नॉर्थ किंग्स की तरफ से यहाँ पे लीड देखने को मिल रही है. फिलहाल नॉर्थ किंग्स दोबारा से यहाँ पे लीड को कैप्टलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. पुरजोर कोशिश रहेगी अटैक करने की, कितने भी कोशिश यहाँ पे करी जा रही है, बट देखते देखते देखिए स्कोर जो है वो ज्यादा आगे बढ़ नहीं पा रहा है. पहला 8 पॉइंट लगातार दोनों टीम्स एक दूसरे को चेस करते दिख रही है, दोनों टीम्स एक दूसरे का गेम परख रही है, लेकिन जो कंटेस्टमेंट है वो दोनों टीम्स के बीच में एक बराबर एकजुट का मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक जैसा देखने को मिल रहा है. समय दोनों टीम्स के लिए सेम दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिल रही है. दोनों टीम्स को आई गेस एक जैसा प्रेशर यहाँ पे फील होता हुआ देखेगा, बिकॉज अब देख सकते हैं लीड ज्यादा बन नहीं पा रही है. चाहे बात करें नॉर्थिंग्स की, चाहे बात करें मेमोरिया की, दोनों तरफ से सेम ही अटैकिंग फॉर्मेशन निकल के आ रही है, दोनों तरफ से सेम ही प्रेशर देखने को मिल रहा है. सो ये चीज भी कहने के अपने आप में बहुत ही अच्छी एक देखने को मिल रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वी गो, डैडी ओपीएस is actually trying his level best to gain some good points. Apart from that, Al Pacino gets taken down with a beautiful shot coming from Zen. That was amazing. Memoria is trying to perform. Memoria is trying to gain the point. Memoria पहले ही जाके अपने आगे हार्ड पॉइंट को कवर करने की कोशिश कर रही है. जिस चीज में अभी के लिए वो सक्षम है, जिस चीज में अभी के लिए वो फ्रूटफुल एक परफॉर्मेंस लेके जाते हुए दिखेंगे. बट लुक एट दैट, डैडी मैनेजेस टू fight the fight, and the spray comes in. Oh, look at that, look at that. This guy is here to counter the hard point. Yes, of course, the counter is here, and finally NorthKings once again bags the hard point in their favor. 45 seconds more to go. They can easily go up to 50 points, 70 points. There is actually a strategic way to lead this particular fight, but देखते हैं क्या सिचुएशन निकल के आती है, किस तरीके से लीड करते हैं अपने गेम को. लोकी ट्रैश की अगर बात करी जाए, उनको भी यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा. व्हेन इट कम्स टू एल पचिनो, बॉलर, रियो, दोनों को टेक डाउन यहाँ पे करते हुए दिखेंगे. यानी कि एल पचिनो अपने आप में कहने के काफी एग्रेसिव है. अब देखिए तीसरा फ्लैग भी निकल के आने वाला था उनकी तरफ से, बट उससे पहले नारी मैन एंड वुल्फ ने जैन को टेक डाउन किया. हार्ड पॉइंट की अगर बात करी जाए, वो भी यहाँ पे फेवर में देखने को मिल रहा है नॉर्थ किंग्स के, एंड नॉर्थ किंग्स आर द वन व्हिच आर लीडिंग इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइट राइट नाउ, बट अ लॉन्ग वे टू गो, बिकॉज अब जानते हैं टारगेट है 250 पॉइंट का. द टारगेट इज ऑफ 250 points. This is the best of 3, and after attaining the first match, they have to actually fight for one more, or they are gonna get tackled. Actually, वो टैकल यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा. वो अटैक सिनर्जी जो है फिलहाल वो देखने को मिल रही है नॉर्थ किंग की तरफ से. नॉर्थ किंग फिर से देखिए कोशिश कर रही है कि अगर हार्ड पॉइंट की जो इस टसल को यहाँ पे कहने को नेग्लेक्ट कर पाए, और शायद उसमें सेक्शन भी देखने को मिलेंगे. But there we go, the containment is there. Oh, the sprays were on point, man. Look at that.
Al Pacino with a beautiful annihilator shot. He's not going to stop. He stop everybody, but he gets stopped. He gets taken down. He gets countered at that exact moment whenever stopping about him. Apart from that, Zen also gets taken down. Finally, the hardpoint comes in the hands of Team NorthKings, but at that same exact moment, Memoria comes in, sweeps in, gets the point. But once again, NorthKings is actually getting the clash. NorthKings is once again actually receiving a lot of damage right now. आप जैसे कि देख सकते हैं समय प्रेशर दोनों टीम्स के ऊपर बराबर ही देखने को मिल रहा है. जैन यहाँ पे थ्रोन डाउन होकर शॉट्स लेना चाह रहे थे, लेकिन कोई खास सक्सेस उनको मिल नहीं पाया उस एक चीज में. यहाँ पे बाइजन लेके थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए दिखेंगे. वो ट्रेन को भी टेक डाउन किया जाएगा. नॉर्थ किंग मेमोरिया को कंप्लीटली टेक डाउन करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है. बहुत ही अच्छा एक मैं कहूंगा प्रेशर उनके ऊपर ऑलरेडी बना दिया गया है. नॉर्थ किंग्स हैज लेट्स से 10 or 5 seconds more to go to gain a lot of point, बट वो यहाँ पे देखिए काउंटर हो जाएंगे. लास्ट की कुछ सेकंड्स जो है फिलहाल मेमोरिया के हाथ जाते दिखे, बट फाइनली मेमोरिया को भी टेक डाउन यहाँ पे करके वो हार्ड पॉइंट जो है वो उसके लास्ट के 2-3 सेकंड्स वर्थलेस गए हैं. किसी भी टीम को वहां से पॉइंट निकल के नहीं मिल पाया. अपार्ट फ्रॉम दैट वुल्फ की बात करी जाए, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. Once again Icebreak comes in. Once again the retaliation fire is gonna be there. As you can see the retaliations are being very on point. एक अच्छा टेक डाउन, एक अच्छी फाइट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है. कुछ बढ़िया टेक डाउन हमें यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है. जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेयर्स गेन करते दिख रहे हैं इस समय पॉइंट्स. नॉर्थ किंग्स मैं कहूँगा अनबीटेबल बनती जा रही है, बट बॉलर विद अ क्लॉ कैन ही एक्चुअली गो अहेड. यस ऑफ कोर्स ही डज. मैनेज टू गेन अ फ्रैग, बट वहीं तुरंत उनको स्पॉट किया गया. एल पचिनो की तरफ से तुरंत ही चेंज किया जाएगा सिचुएशन को. नॉर्थ किंग्स धीरे करके पॉइंट उठाना शुरू कर चुके हैं. आप देख सकते हैं नॉर्थ किंग्स की तरफ से एक अच्छी लीड को बनाने की यहाँ पे कोशिश करी जा रही है, but still the attacking formation is something which is not working out for them right now. देखते हैं क्या सिचुएशन निकलती है. Apart from that, more and more space, more and more dominations, the damage is coming up, the carnage is still coming up. Well, on the other corner, Memoria with 50 plus points, I guess they're trying their level best to just counter the lead that NorthKings have made. But वो इतना आसान नहीं रहने वाला. देखिए NorthKings की लीड को तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा इस समय, because NorthKings जिस मेटा के साथ आगे बढ़ रही है, जिस फिनिशेस के साथ आगे बढ़ती जा रही है, जिस कार्नेज के साथ, जिस एग्रेशन के साथ आगे बढ़ती जा रही है, उनके लिए काफी हेल्पफुल निकल के आ रहा है. देखिए स्पॉट किया, फिर से कुछ प्लेस यहाँ पे देखने को मिले. एक और अच्छा टेक डाउन हमें जरूर से देखने को मिला. बट NorthKings की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो वो अभी लीड को दोबारा से अपने पास रखने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इनके वुल्फ को टेक डाउन यहाँ पे कर दिया जाएगा. NorthKings वेल एक और खिलाड़ी NorthKings के डाउन होते हुए दिखेंगे. NorthKings के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं. माइनस माइनस के साथ NorthKings का जो एक होल्ड था हार्ड पॉइंट के अंदर वो तोड़ दिया जाएगा. बट मोर एंड मोर स्पेस, वुल्फ इज हियर टू काउंटर इट एंड वुल्फ डज इट क्वाइट ब्रिलियंटली. वुल्फ की तरफ से एक शानदार काउंटर यहाँ पे देखने को मिला, एक जानदार गन गेम यहाँ पे देखने को मिला है. स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं NorthKings की समय अच्छी लीड है, बट उस लीड को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं वो फिलहाल. उस लीड को बढ़ाने की जैसे भी कोशिश करते हैं तुरंत ही यहाँ पे काउंटर निकल के आ जाता है, तुरंत ही गेम चेंज कर दिया जाता है. विच फॉर्चुनेटली आई गेस टीम मेमोरिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है. मेमोरिया जिस तरीके से अब लगातार काउंटर कर रही है टीम NorthKings को, आई गेस वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इनके लिए यहाँ पे रहने वाला है. सो डेफिनेटली दिस हेल्प इज एक्चुअली गोना push them a lot in the leaderboard. I guess यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली. लीडरबोर्ड के अंदर क्या सिचुएशन रहेगी, बेस्ट ऑफ 3 है तो यानी कि 2 मैचेस में से कौन से मैचेस वो जीतेंगे, और क्या वो पहला मैच रहेगा, क्या वो दूसरा मैच रहेगा, या फिर वो दूसरा तीसरा मैच रहेगा. पॉसिबिलिटीज एंडलेस है समय, बट इन पॉसिबिलिटीज पर वर्क करते हुए टीम NorthKings काफ़ी आगे बढ़ती जा रही है. आप देख सकते हैं NorthKings के जो खिलाड़ी हैं वो एक बहुत ही अच्छी सिनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं. 134 पॉइंट्स निकाल चुके हैं. अगला हार्ड पॉइंट भी काउंटर यहाँ पे करने की पुरजोर कोशिश करी जा रही है. आप देख सकते हैं साइड्स जो है वो कवर कर रहे हैं, लेकिन स्प्रे आता जा रहा है इनके ऊपर. लगातार टेक डाउन करने की कोशिश रहेगी. ट्रॉफी सिस्टम या पॉइंट यहाँ पे कर दिया है. एक अच्छा खासा प्रेशर जरूर से यहाँ पे बनाएंगे खिलाड़ी के ऊपर. वो प्रेशर देखिए अब इस समय टीम NorthKings के ऊपर काफी भारी पड़ रहा है, बट फिर भी वो डील कर ले रहे हैं. जितने भी ट्रेड्स यहाँ पे आ रहे हैं वो उसको निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉइंट्स को अपने फेवर में ले जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज मानी जाएगी अपने आप में. NorthKings की तरफ से जो मेटा है, जो एक्सप्लोरेशन है, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल उनके लिए देखने को मिलेगा. स्पॉट किया, एक और टेक डाउन, लेकिन तुरंत ही ट्रेड फायर में तुरंत ही फायर के यहाँ पे थ्रू टेक डाउन करते हुए दिखेंगे. NorthKings 170 पॉइंट्स के पास बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है. आई बिलीव 170 पॉइंट्स काफी इजीली वो हिट कर भी देंगे यहाँ पे, बट उससे ज्यादा आगे बढ़ पाना थोड़ा सा इनके लिए डिफिकल्ट रह सकता है. हालांकि इस समय टीम मेमोरिया की अगर बात करें जाए, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो पॉइंट्स को उठाएं, बट दे आर वंस अगेन गेटिंग टैकल्ड बाय द टीम नोन एज NorthKings. एंड NorthKings एक अच्छे एनर्जी के साथ, सही मोमेंट के साथ खेलने के आगे बढ़ती दिखेगी. लेकिन मैंगो को देखिए, व्हाट अ फ्लैंक फ्रॉम हिज कॉर्नर. जानते थे कि कहने के वो सिचुएशन से अनअवेयर रहेंगे, एंड उसी चक्कर में उन्होंने 2-2 फ्लैग उठा लिए वहां से. 2-2 एरिया को डेवस्टेट करने की कोशिश करी. 190 पॉइंट्स के पास पहुंच चुकी है NorthKings. अगर अगला हार्ड पॉइंट होल्ड कर लेते हैं फेटफुली तो शायद वो इजीली यहाँ पे जीते हुए दिख जाएंगे. पहले मैच को सेमीफाइनल का मैच नंबर 1 उनके हाथ में जा सकता है. बट लुक एट दैट, ग्रेविटी वॉर्टेक्स ऑलरेडी आ चुका है. उस गन का इस्तेमाल काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा. लुक एट दैट, 2 वॉर्टेक्स हैव बीन यूज्ड. लगातार ग्रेविटी वॉर्टेक्स का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा खासा प्रेशर वो बनाते हुए दिखेंगे, लेकिन उनके एक खिलाड़ी ऑलरेडी जा चुके हैं. हार्ड पॉइंट गोल कर रहे हैं. प्यूरीफायर S2 इज हियर राइट नाउ गाइस. वुड लव टू सी यहाँ पे सिचुएशन निकल के आती है. प्यूरीफायर
अगेन कहूँगा मैं वन ऑफ माई फेवरेट गन्स। फ्री फायर एक ऐसी गन है यहाँ पे कहने के देखने को मिलती है जिसका अगर कनेक्शन बन गया तो फिलहाल वहाँ से आपके लिए दिक्कतें बढ़ी जाती हैं। देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू बाउंस बैक। मैंगो मैनेज टू टेक डाउन द गाय जिनके पास प्यूरीफायर था यहाँ पे, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था। देखिए टीम को अगर आगे बढ़ाना है तो प्यूरीफायर जैसे जो गन्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, फिलहाल उनको आप टेक डाउन अगर आप कर लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे फॉर अ ब्रीफ टाइम पीरियड नॉर्थ किंग्स को यहाँ पे हटाया जाएगा, मेमोरिया को वापस लाया जाएगा। मेमोरिया इस एरिया के अंदर वापस यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट नॉर्थ किंग्स का जो अगला टारगेट है वो देखने को मिलेगा द नेक्स्ट हार्ड पॉइंट कमिंग अप। सो डेफिनेटली नॉर्थ किंग्स पूरी वो वहाँ पे पुश फॉरवर्ड करती हुई दिखेगी, और देख सकते हैं आप नॉर्थ किंग्स अगले हार्ड पॉइंट को होल्ड करने की पुरजोर कोशिश करेगी, और शायद अगर सक्सेसफुल रहे तो फिलहाल सेमीफाइनल्स का जो पहला मैच है वो उनके नाम जा सकता है। सेमीफाइनल्स 2 का फर्स्ट मैच उनके नाम जा सकता है। सेमीफाइनल जो पहला बार था उसमें तो गॉडलाइक ने आपने ऑलरेडी देखा एक वन साइडेड गेम यहाँ पे दिखा के बहुत ही अच्छी तरीके से आगे अपनी बढ़त को बनाया है, बट इस मैच में 230 पॉइंट्स ऑलरेडी टच कर चुकी है नॉर्थ किंग्स। हार्ड पॉइंट का जो स्कोर है वो आप यहाँ पे सिर्फ 19 पॉइंट और यहाँ पे चाहिए किसी न किसी तरीके से, और उसके लिए वो काम यहाँ पे कर रहे हैं, उसके लिए वो अटैक करते जा रहे हैं। जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बढ़ रही है वो करते हुए देखेंगे, बट मिनाजो की तरफ से एक शानदार मिनाजोकी की तरफ से आपको देखने को मिला डबल किल। अपार्ट फ्रॉम दैट लुक एट दैट गाइस, लुक की ट्रैश ने कोशिश करी इन्फिल्ट्रेट करने की उस एरिया को, बट द हार्ड पॉइंट गॉट काउंटर्ड एट दैट सेम एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्थ किंग्स ऑन द अदर कॉर्नर इज लुकिंग ग्रेट, एंड वहीं अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक टू द टीम ऑफ मेमोरिया, उनकी परफॉर्मेंस में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। मेमोरिया के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। एट द लास्ट मोमेंट मेमोरिया शायद थोड़े पॉइंट्स यहाँ पे इकट्ठे कर ले जाए, बट देखिए इस समय नॉर्थ किंग्स के पास बहुत ही आई गेस क्लोज एक काउंटर करने का मौका है इस समय। अगर वो जस्ट 2 पॉइंट और यहाँ पे उठा ले तो ये मैच उनके नाम यहाँ पे जा सकता है। बीच में वो 2 पॉइंट कभी भी आ सकते हैं, एंड आई गेस नाउ इट्स गोना बी द टाइम मैन। या देयर वी गो गाइस, जैसे टाइम रन आउट होता हुआ दिखा, जैसे ये हार्ड पॉइंट एंड होता हुआ दिखा था हमें फिलहाल, एट दैट सेम एग्जैक्ट मोमेंट द हार्ड पॉइंट has been covered up by the team known as NorthKings. NorthKings अपनी Icebreak सीरीज 2 में पहले मैच के अंदर ही बहुत ही अच्छा खासा गेम निकाल के लेके जा चुकी है, बट नाउ आई बिलीव वी हैव टू चेक आउट द replays as well which will showcase us that what happened eventually. क्या थे वो हाईलाइट मोमेंट्स, क्या थे वो अमेजिंग मोमेंट्स जहाँ पे चीज़ें बदलती हुई दिखी। सो डेफिनेटली गाइस उन चीज़ों को भी हम चेक आउट करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द replay so that we can check out that what happened and eventually how the game went out. And mind it guys, it was absolutely brilliant. Look at that. मिनाजुकी की बात करें स्पेसिफिकली, उन्होंने अपनी टीम के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे करके दिखाया आज के दिन। काफ़ी अच्छे काउंटर्स भी उनकी तरफ से देखने को मिले थे, बट इन काउंटर्स में सबसे बड़ी बात क्या निकल के आई कि फॉर अ ब्रीफ टाइम पीरियड नॉर्थ किंग्स के पास वो सिनर्जी देखने को नहीं मिली थी। जब वो तीसरे और चौथे हार्ड पॉइंट की तरफ बढ़ रहे थे वहाँ पे दिक्कतें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी। एट दैट टाइम दे हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. They started it off quite well, they ended it off quite well, in a style to be precise, but in the mediocre let's say type of a period, वहाँ पे उनके लिए दिक्कत काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी। नॉर्थ किंग्स के लिए बीच के टाइम पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला था, बट फॉर्चुनेटली दे वर एबल टू कवर इट ऑल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर मेमोरिया वन मोर मैच टू गो। अदरवाइज अगर ये मैच भी यहाँ पे के ने निकाल दिया, यानी कि नॉर्थ किंग ने निकाल दिया, तो मेमोरिया के लिए वो जो टिकट टू ग्रैंड फिनाले है वो उनके यहाँ से निकल जाएगा। बट बिफोर दैट लुक एट द कार्नेज दैट टीम नॉर्थ किंग एक्चुअली शोकेस। मैंगो की तरफ से ये जो फ्लैंक था काफ़ी ब्यूटीफुल देखने को मिला। लिटरली उन्होंने 2 किल्स वहाँ पे उठाई, चुपचाप खड़े खड़े, और वहीं अगर बात करें जो बॉलर की उनकी तरफ से भी एक अच्छा किल था। बट लुक एट दिस प्यूरीफायर अटैक। प्यूरीफायर देखिए वन ऑफ द फेवरेट गन्स है मेरी, बिकॉज डेफिनेटली ये जो गन है उसका मेटा ही अलग है और उसका प्रेशर ही कहने के काफ़ी अलग देखने को मिलता है। हालांकि आजकल मुझे क्लॉ भी काफ़ी पसंद आ रही है, एनालिटर तो बहुत पहले से पसंद थी। उसी के अलावा ग्रेविटी वोटेक्स गन वो मुझे ज़्यादा इतनी ऑप्टिमिस्टिक लगती नहीं है फिलहाल, कहीं ना कहीं जब आपके शॉट वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाते तो फिलहाल दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ग्रेविटी वोटेक्स गन इतनी पसंद नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स टॉक अबाउट द स्कोर बोर्ड। आप जैसे कि देख सकते हैं लीड है यहाँ पे 150 प्लस पॉइंट्स की नॉर्थ किंग्स के पास। जो एमवीपी है फिलहाल यहाँ पे मेमोरिया के ओवर रहेंगे मैंगो 37 किल्स 22 डेथ्स एंड 10 असिस्ट। एंड वही एमवीपी अगर बात करें जाए फ्रॉम टीम नॉर्थ किंग इज गोना बी एल पचिनो विद 40 kills, 23 deaths and 7 assists. This is the scoreboard for you guys. So you can check it out कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा डिटेल निकला, किस तरीके से पूरी फाइट यहाँ पे निकल के आई है। But moving up guys, I guess the carnage was absolutely amazing. पहला मैच ऑलरेडी यहाँ पे ओवर हो चुका है सेमीफिनाले 2 का। Now moving on, we'll go to the सेमीफिनाले मैच नंबर 2, और उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक एंड उसके बाद देखेंगे what happens between Memoria and NorthKings.
Welcome back once again, guys. We're back again with the bang, and eventually you saw the carnage between NorthKings and Memoria. A beautiful buffer of 150 plus points coming from NorthKings, and they are showcasing their talent. But before that, let's move on to the map veto so that we can check out that what is going to happen in the next one. Which are the two teams going to face off? Well, of course, the teams are going to be pretty much same. Memoria versus NorthKings. NorthKings is maintaining the lead, and you saw there was 250 points coming from Team NorthKings in the Hardpoint, which was in the Hacienda, and 83 points was there by the team known as Memoria. That's a sad one for Team Memoria, but eventually I guess standoff is gonna be the map, and Search and Destroy is gonna be the mode where they can easily bounce back and maybe attain the points so that they can bring back the glory for this particular team and have a second chance to attack and take off the particular control mode. So we have to check out what happens. We have to see what happens eventually in this particular game as well. So yes, of course, guys, standoff का ये जो मोड है, जो मैप है, to be precise, और कहीं ना कहीं सर्च एंड डिस्ट्रॉय का जो मोड है, 7 आपको राउंड विन लिमिट का जो एक टारगेट है वो मिलता है। फिलहाल हर राउंड में आपको 120 सेकंड्स देखने को मिलेंगे, सो डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन बनेगा अटैकर, कौन रहेगा डिफेंसर, वो सब यहाँ पे देखने को मिलने वाला है फिलहाल। सो डेफिनेटली गाइस, हमारा जो गेम है वो कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग निकल के आता हुआ दिखेगा। जो अटैकिंग फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा अमेजिंग देखने को मिलने वाला है। So yeah, we have to check out, we have to see what will happen, how the game is going to get attacked. Memoria की अगर हम specifically बात करें यहाँ पे फिलहाल, तो ये उनके पास बहुत ही अच्छा खासा मौका है to lay off every other thing and get their let's say 110% to be precise, and attack and aim to actually have that point in their favor. तो क्या यहाँ पे सिचुएशन रहेगी उनके लिए? मेमोरिया शुरुआत से अटैकर बन के या फिर डिफेंसिव जो भी यहाँ पे उनका जो रोल रहेगा वो बन के यहाँ पे किस तरीके से पॉइंट उठा पाती है, सारी चीज़ों पे हम फोकस अपने जरूर से करेंगे। The only thing I'm actually scared about is what if NorthKing bags this one as well. तो फिलहाल हमें NorthKings फेस ऑफ करते देख सकते हैं GodLike से, बिकॉज GodLike का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ गाइस? Because we all know that GodLike won the first semi-finale, to be precise. But now let's go to the versus screen, and Memoria versus NorthKings. Once again, we are waiting for this match to get started. It is actually going to be the Search and Destroy. The mode will be absolutely amazing. Well, of course, we are ready for the game, and we are going to dive in the game without waiting any time, without wasting any time, to be precise, without waiting for any more time. We're going to move in, and there we go. Match of the comeback will start anytime soon. So let's see किस तरीके से गेम यहाँ पे निकल के आता है, क्या comeback यहाँ पे देखने को मिलेगा. All right, there we go. Look, the trash is coming up in front of us. While the shots are coming up, no doubt in that. Mango manages to actually devour some good guys. Well, from the other corner, as you know, bags one. That's gonna be Loki Trash. Mango devours Daddy OPS. That's amazing. And now Mango and the other guy Zan is the only two members which are surviving. Only two members which are going to move up. And oh, that was amazing. Al Pacino gets taken down, gets countered. Apart from that, the katana has been revealed. Al Pacino, after getting taken down, now the lead comes once again in the hands of team known as NK NorthKings. आखिरी एक खिलाड़ी को टेक डाउन करेंगे और उसी के साथ गेम को अपने नाम में अपने करते हुए दिखेंगे. I believe they can easily do that. Zan managed to take one down. He's the survivor of this particular fight, but can he move forward? As the biggest question, can he do the 1v3? We have to check it out. लग रहा है मुश्किल यहाँ पे कहने की देखने को मिलेगा. 1v1 का सिनेरियो देखने को मिल रहा है. Wow, that's amazing. इनके वोल्फ की बात करी जाए स्पेसिफिकली, they have to go ahead and plant the bomb. तो क्या वो बॉम्ब प्लान करने जाएंगे? I guess वो एक बेटर स्ट्रेटजी यहाँ पे देखने को मिलेगी. फटाफट से बॉम्ब अगर वो प्लान कर ले तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल निकल के आ सकता है ना. आप देख सकते हैं ऑलरेडी बॉम्ब प्लान करने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन जैन की तरफ से जो गेम को पे पलटा गया है ना, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. आप देख सकते हैं इस खिलाड़ी के पास स्पेशलिटी देखने को मिलेगी. स्पॉट्स हिम आउट एंड देयर वी गो. NorthKings अपनी लीड को ऑलरेडी अपने हाथ से गवाती दिखेगी, बिकॉज ये वो कमबैक का मोमेंट है जिसके लिए हम वेट यहाँ पे कर रहे थे. मेमोरिया की तरफ से हमें वो कमबैक देखने को मिल रहा है. लविंग द वे जिस तरीके से पूरा कमबैक निकल के आ रहा है, एंड दैट्स हाउ द कार्नेज विल बी गेटिंग इन आवर फेसेस राइट नाउ. अमेजिंग वन. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टीम मेमोरिया फॉर दिस काइंड ऑफ लेट्स से कमबैक कमिंग अप. और मेमोरिया इस कमबैक के साथ कितना आगे जा पाएगी, कितना ज्यादा आई गेस एनलार्ज कर पाएगी इस बफर को, वो हम जरूर से देखना चाहेंगे. Well, this is a chance for team Memoria to bounce back. Loki Trash comes up with the need, and the need gets connected. No, the connection was not there. Apart from that, some more visualization of those shots are coming up. NK Daddy OPS gets taken down. 3 good members from team NK have been taken down. That's a sad one to watch out. Oh man, El Pacino also gets connected now. It's all about Wolf. He's the last one standing. NK is not looking that great. Well, once again, NK gets taken down. Memoria bounces back. That's amazing. Memoria coming up with some good blows. Oh man, that's a troublesome situation for a team known as NorthKings. I don't know what is happening to NorthKings, but they have to wind up gaining some good points. They have to actually prove themselves that they are the one who is going to move up for the battle between GodLike and NorthKings. So yeah, let's see what happens. Still have to see how the counter is going to get formed.
अभी भी यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि काउंटर वो कर भी पाएंगे या फिर नहीं। पिचिनो की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, अपने आप में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। फिलहाल पिछले मैच में MVP बन के निकले थे। इस मैच में एग्रेशन की हमें यहाँ पे बात करनी है तो वो एग्रेशन तो देखने को नहीं मिल पा रहा, बट वो कोशिश जरूर से कर रहे हैं जैन की तरफ से। CBR4 का इस्तेमाल, CBR4 काफी कम कर दिया गया है इस्तेमाल करना, बट फिर भी जब भी यूज करते हैं प्लेयर्स एक अच्छा सिनर्जी यहाँ पे देखने को मिलता है। बट देयर वी गो, लुक एट दैट, द अटैक इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। बात करी जाए बाकी प्लेयर्स की, देखिए स्पॉट यहाँ पे किया जाएगा, कुछ और अच्छे स्प्रेज यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। पिचिनो को डाउन किया गया, जेन को डाउन किया गया, बॉलर को डाउन किया गया। 3 वर्सेस 3 का स्कोर यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैंगो यहाँ पे पुश करने की कोशिश करते हुए दिखेंगे। मैंगो वेटिंग फॉर द राइट मूवमेंट, गोज इन फॉर द स्प्रे। रियो ऑन द बैक फुट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। रेन प्रेजेंट है, देखते हैं फिलहाल क्या सिनर्जी निकल के आती है। वुल्फ यहाँ पे प्रेजेंट है, एक और शॉट का इंतजार, कोई फायदा नहीं। मेमोरिया बैग्स द थर्ड वन, बैक एंड फोर्थ। मेमोरिया इज कमिंग बैक विद अ ब्यूटीफुल ब्लो। आप देख सकते हैं मेमोरिया की तरफ से एक शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी, एंड दैट इज एब्सोल्युटली कमिंग अप एज अ लवली परफॉर्मेंस, नो डाउट ऑन दैट। But Memoria, will they be able to win this one? Will they be able to move on with a counter? We have to check out guys, क्योंकि अगर कंट्रोल के अंदर गेम गया, देखिए कंट्रोल खत्म तो बहुत जल्दी होता है, लेकिन रिजल्ट वहाँ पे काफी क्लियरली आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं केबल की तरफ से बॉलर को भी डाउन कर दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंगो इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू स्ट्राइक ऑन। शुरुआत काफी अच्छी देखने को मिल रही है मेमोरिया की। 3 राउंड वो ऑलरेडी यहाँ पे जीत चुके हैं, और फिलहाल इस समय नॉर्थ किंग्स का तो खाता भी नहीं खुला है। नॉर्थ किंग्स don't even have a single round in their favor. So yes, of course, North Kings has to work on that, and if they are able to do so, that will be lovely for them. Although I don't think so कि इतनी easily अब मेमोरिया अपनी लीड को अपने हाथ से निकलने देगी, because देखिए मेमोरिया ने बहुत स्ट्रगल किया है for this. Okay, Zan gets taken down. That's a beautiful counter coming from team North Kings. Interestingly, North Kings हमें यहाँ पे काफी अच्छी खासी बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। Rio on the back corner gets spotted over, one more takedown coming up. Mango becomes the last one. Mango is the only ray of sunshine for the team. He has to go for a 1v4. Can he do for that? Can he go for that? He has to go for an ace, because उन्होंने यहाँ पे एक खिलाड़ी को डाउन कर दिया ऑलरेडी फ्रॉम टीम नॉर्थ किंग, और जो बाकी के 4 हैं वो तो अभी जीवित देखने को मिल ही रहे हैं। स्पॉट हुआ और इसी के साथ लीजिए बहुत ही बढ़िया तरीके से नारीमन की तरफ से टेक डाउन देखने को मिलेगा, और इसी के साथ हमें वो कमबैक देखने को मिल रहा है। गोरिल्ला स्क्वाड इज फाइनली बाउंसिंग बैक। द वे दे आर बाउंसिंग बैक, इट इज एक्चुअली समथिंग टीम मेमोरिया हैज टू वरी अबाउट, बिकॉज मेमोरिया अगर परफॉर्मेंस अपनी नहीं दे पाई इस समय, the game will actually go out from their hands. So yeah, these are the small minute details these guys have to actually work on and maybe perform exceptionally well along with that. So definitely देखते हैं guys क्या पे सिचुएशन निकलती है, किस तरीके से अपना इम्पैक्ट एस्टैब्लिश यहाँ पे कर पाएंगे, वो भी देखना हमारे लिए कंपैरेटिवली काफी अमेजिंग रहने वाला है। इनके वोल्फ की बात करी जाए, उनको टेक डाउन कर दिया जाएगा। नॉर्थ किंग से खिलाड़ी को 1 सेकंड यहाँ पे काउंटर किया जा रहा है। Zen still waiting, awaits for the right opportunity, but gets connected. Man, oh man, an amazing blow indeed. But Mango from the back end comes ahead and backstabs the guy. North Kings, well, will they be wind up with the points in their favor, or is it gonna be a game where they will go down to the dust? Let's see what happens. Nariman still waiting, still looking forward to see what will happen, how the game is gonna get converted. It's a 2v2 situation coming up. The bomb, I believe, has not been planted yet. So definitely the bomb has to get planted. Let's see how they're going to plant the bomb and eventually attack with it. We have got 2 good guys from team NK surviving, moving up to the ladder. And it's Minazuki from the left corner. They're trying to flank it up, going for the A side, I believe. Bomb is already out in the open arena. They have to gather it up and eventually make sure to plant it up, because now 40 more seconds to go. Just 40 more seconds, guys. So not a lot of time period to survive with and move around with and play with, to be precise. बट भाई अगर बात करें जाए लोकी ट्रैश की, तो देखिए वो भी अपने आप में काफी अच्छे खासे प्लेयर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। लोकी ट्रैश के पास अभी तक सिर्फ एक ही किल है, बट Minazuki gets connected by Mango. A beautiful blow indeed. This could be another beautiful victory for a team known as Memoria, to be precise. Okay, gets spotted. Madman comes up with a spray. Indeed, a beautiful one. Mango on the other corner is on the low foot. And Loki Trash, well, another spray. And with that amazing blow, Special Forces moves up with the 4 wins. And Gorilla Squad with only 1. That's a bad one for team North Kings. I don't know what is they are trying to do, what they are trying to perform with. But eventually, very soon, the sides will switch after this particular round. After 6 rounds, the side switches, and I believe then the attackers are going to be Memoria. And I believe with that, the difference can actually come up. With that, the change can actually come up. Loki Trash gets taken down. Apart from that, Baller also gets connected. That's interesting. 2 good guys are already been taken down. Apart from that, Zan is also not looking that great. And yeah, Zan has been picked off. Mango and Rio are the only 2 guys. Okay, that's it. This is what we call the comeback coming from the Gorilla Squad. Or should I say North Kings? Well, they are coming back. They are bouncing back. The sides have been switched. Finally, it's going to be North King who has to just be a defensive one. And when it comes to the team known as Memoria, they have to bounce back and gain some good points. Not looking that easy for Team Memoria now.
Well, bouncing back, trying to take the trade, trying to actually attack on the pitch. Oh, another beautiful takedown from Loki Trash with a beautiful TLQ-33. Amazing one. Mango on the other corner goes aggressive, wants to gain some good points. Mango, can he deliver the fight? Yes, I believe he can. Right now, North King is not looking that great, as you can see. Wolf on the other corner gets spotted. He gets taken down just like that. Sitting on the corner, gets taken down. Now it's all about Al Pacino. Spots one, takes one down. Oh, it's a 1v2. Wow, that's amazing. But finally, he gets phased off from the attack. And with this, the Special Forces once again backs a beautiful victory. Gorilla Squad, you have to go for a long way. You have to go for a long walk right now. Otherwise, it's going to be another beautiful chance for the team, which we call as North Memoria, to be precise. Because मेमोरिया देखिए जीत के बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है. मेमोरिया कुछ इस लेवल पे आ चुकी है, उनको सिर्फ 2 ही राउंड जीतने हैं और भाई नॉर्थ किंग्स को उल्टा करना है. उनके पास 2 ही राउंड है, उनको 5 जीतने हैं. और हमने अगर बात करी जाए सेमीफाइनल 1 की, तो वहाँ पे गॉडलाइक को भी कुछ ऐसा ही करते देखा था. गॉडलाइक जहाँ पे 5-5 के स्कोर तक इक्वल तो ले आई थी, और उसके बाद अचानक से उन्होंने एक नॉच पे बढ़ाया था गेम को, और अचानक से कहने के गेम को चेंज यहाँ पे कर दिया था. मीनाजुकी टेक डाउन हो चुके हैं, एल पचिनो टेक डाउन हो चुके हैं, वुल्फ वेल उनको यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा टेक डाउन करने का मौका मिला, बट एल पचिनो की तरफ से बॉलर को यहाँ पे टेक डाउन कर दिया जाएगा. अमेजिंग शॉट, वो 0.50 जीएस यहाँ पे देखने को मिला, बट कोई फायदा नहीं, पीछे उनके खिलाड़ी प्रेजेंट थे. एक अच्छा खासा ट्रेड हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है. ये गेम ओवर टाइम की तरफ भी जा सकता है गाइस. स्पेसिफिकली अगर वो एक अच्छा खासा एंटीसिपेशन देखने को मिला, दैट कुड बी इट. लुक एट द स्पेस बीइंग डेल्ट. स्विच ब्लेड का यहाँ पे इस्तेमाल काफी अच्छी तरीके से करते दिख रहे हैं खिलाड़ी. इस समय रिजल्ट आपके सामने काफी क्लियरली हम कह रहे हैं कि प्रदर्शित होता हुआ दिखेगा. बट मैंगो आल्सो गेट्स कनेक्टेड एट द सेम मोमेंट. एल पचिनो इज बीइंग quite precautious about that, but Daddy OPS managed to put one more down, and that's it. Look at that, North Kings is bouncing back. That's amazing, man. North Kings यहाँ पे वापस ला रहे हैं अपने गेम को. Amazing, that's all. Lovely. एक अच्छा गेम, एक अच्छी सिनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है. बट ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नॉर्थ किंग्स की, उनका जो गेम है मुझे वो उस लेवल पे देखने को नहीं मिल रहा जो कि रिस्पॉन्स में यानी कि हार्ड पॉइंट्स में देखने को मिला था. हार्ड पॉइंट्स में देखिए उन्होंने लीड कितनी अच्छी बना दी थी. ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ हार्ड पॉइंट की, तो वहाँ पे उनके पास क्लोज टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 163-167 पॉइंट्स की लीड देखने को मिली थी. बट अभी वो पूरी की पूरी लीड इनके हाथ से निकल रही है. लुक एट दैट स्मूथ शॉट कमिंग फ्रॉम लोकी ट्रैश. Oh man, lovely. Loki Trash is absolutely amazing. इनको पहले भी मैं कई बार देख चुका हूँ. I have seen Loki Trash performing in some battles which were there previously in Call of Duty Mobile India channel as well. But अभी अगर मैं बात करूँ precisely अगर NK की, तो नॉर्थ किंग्स के जो प्लेयर हैं वुल्फ, वो अपने आप में काफी अच्छे खासा सिनर्जाइज गेम प्ले को लेकर आ रहे हैं. एल पचिनो की तरफ से काफी चीजें पलटती हुई दिखी है, बट एल पचिनो अभी के लिए तो आप टेक डाउन हो ही चुके हैं. इस मैच के लिए स्पेसिफिकली इस राउंड के लिए एल पचिनो अभी बाहर देखने को मिलेंगे. बट आप देख सकते हैं डैडी ओपीएस वेटिंग फॉर द मोमेंट, still being very sneaky, still being very dominant in his own kind of style. उनका वो स्टाइल है कहने के वे काफी ज्यादा रुकते हैं, समझते हैं गेम को, और तब उसके बाद अटैक करते हैं. Oh, the shots are there, the ball bank comes in. Man, oh man, कुछ भी नहीं कर पाए वो खिलाड़ी. बिल्कुल वर्थलेस वहां पे देखने को मिला उनका परफॉर्मेंस. A sad one indeed. Moving up ahead, if we talk about Zen, let's see how he's going to counter the fight, waiting for the right moment to strike on. अब देख सकते हैं वुल्फ यहाँ पे वेट कर रहे हैं सही मौके पे. अच्छा एक अटैक करने की कोशिश रहेगी उनकी तरफ से. People are waiting. Loki Trash gets connected from Minazuki. That's interesting. It's a 3v3 coming up now. The scorecard is coming up to an equalizer, I believe, in this particular map. राउंड के अंदर अब चीजें क्लियर आउट हो रही है. एक और स्प्रे, वेल द कनेक्शन वाज ऑन पॉइंट. स्पॉट्स वन मोर, बॉल बैंक करने की उनको भी कोशिश करते हुए देखेंगे, बट एक और ट्रेड ऐसे के साथ मैंगो को भी टेक डाउन किया जाएगा. नाउ द बॉम्ब डिफ्यूजन हैज टू बी देयर. इट कैन बी वेरी इजी, इट कैन बी वेरी इफेक्टिव, एंड यस ऑफ कोर्स द बॉम्ब डिफ्यूजन इज कमिंग अप. द डिफेंडर्स आर वंस अगेन बैगिंग द विक्ट्री. 5 वर्सेस 4 का स्कोर देखने को मिलेगा. इस समय साइड स्विच करने से पहले ही गेम चेंज हो सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Gorilla squad is looking quite good at this moment. They are coming back, they are bouncing back, but how far they can actually do with this kind of gun game is the biggest question for me right now. ये सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर. अभी तक के लिए 4 मैचेस हम लोग विटनेस कर चुके हैं. दिस इज एक्चुअली द 4th वन. और आप लोगों से गाइस एक और रिक्वेस्ट रहेगी, एक क्विक रिक्वेस्ट रहेगी कि फिलहाल जाके GD Esports ऑफिशियल को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे भी जितना ज़्यादा हो सके अपना सपोर्ट बना के रखिए. बिकॉज ऐसे अमेजिंग टूर्नामेंट्स, ऐसे अमेजिंग एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं इन मेनी गेम्स. लाइक फ्री फायर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको, कभी कभी GD Esports की तरफ से CODM तो आपको देखने को मिल ही रहा है, वैलोरेंट देखने को मिल जाता है. तो काफी कुछ अमेजिंग टूर्नामेंट्स, काफी कुछ अमेजिंग इवेंट्स आपको GD ऑफिशियल्स की तरफ से देखने को मिल जाता है. तो आप लोग रेडी रहिए उन सब चीज़ों के लिए. आपको सारा अपडेट मिल जाए उसके लिए आप लोग को इंस्टाग्राम हैंडल जरूर से फॉलो कर लेना है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी अगर नोटिस आती है, कोई भी अगर इवेंट अनाउंस होता है, तो वो वहीं पे होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ गेम की इस समय, तो इनके केयरटेक है, बट उतनी नहीं जितनी यहाँ पे कहने कहीं आपको टीम में मेमोरिया देखने को मिल रही है. बिकॉज दोनों तरफ से यहाँ पे 3-3 का स्कोर देखने को मिल रहा है. 3-3 प्लेयर्स यहाँ पे लाइव देखने को मिलने वाले हैं. बेला की बात करें, बेला की तरफ से कोशिश थी कि कहने के वो अपने DLQ से शॉट्स को अपॉइंट कर पाए, हालांकि इज नॉट शुड आई से प्रूवन राइट एट दिस मोमेंट. उनके शॉट्स कनेक्ट हो नहीं रहे.
Oh, another spray, another takedown. Can it be possible? No, it is not. Team NK is facing a lot of loss. That's a bad one for NK. अगर NK अभी bounce back नहीं कर पाए तो ये मैच overtime के लिए भी जा सकता है if I'm not wrong. And if overtime comes in, it will be very tedious. और फिर से कहने के वो जो एक synergy है वो देखने को मिलेगी, वो जो aggression है वो देखने को मिल जाएगा. Maximum 11 मैचेस की तरफ हम यहाँ पे जा सकते हैं, but देखते हैं क्या स्कोर कार्ड यहाँ पे निकल के आता है, एक्चुअली क्या इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है. Spots 1 stays are there. Look at the damage being dealt. Absolutely an amazing one, no doubt on that. An interesting level of, let's say, anticipation being dealt. Oh man, that's a bad one. Now it's all about Wolf. He has to do a 1v2. Can he do it? And I doubt it won't be possible. But yeah, let's see what happens. Bomb has to be planted. Zan goes in for that. Zan is going to actually go ahead and plant the bomb. He's successful in it. Good enough. Goes for the bomb. Plants the bomb. From the right corner, there could be an enemy coming up. Oh, the trophy system managed to put down Zan. That's interesting. But on the other corner, it's Memoria once again banging it out with a beautiful nade. Just like that, Memoria comes up, and I believe now it could be overtime. अगर Memoria यहाँ पे ये मैच को नहीं जीत पाई तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ओवर टाइम के थ्रू हमें जाना पड़ेगा, बिकॉज नॉर्थ किंग्स नाउ दे हैव टू एक्चुअली गो फॉर द स्कोर ऑफ 6-6 एंड उसके बाद उनको 4 राउंड सेटअप अभी जीतने हैं अगर उनको यहाँ पे पूरे मैच को आगे लेके चलना है. अदरवाइज दिस कुड बी इट. दिस कुड बी द मैच वेयर द गेम विल चेंज. सो डेफिनेटली वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस. डेफिनेटली वी हैव टू लुक इनटू इट. द शॉट्स आर कमिंग अप, नो डाउट ऑन दैट. 2 minutes to go. 1 minute and 45 seconds honestly. Mango on the other corner waits for the right moment. ट्रॉफी सिस्टम अपॉइंट हो चुके हैं, हर एक चीज काफी ऑन पॉइंट देखने को मिल रही है. आप देख सकते हैं शॉट्स लिए गए. ओह, Zan को टेक डाउन पे कर दिया जाएगा. इंटरेस्टिंग. Mango is still waiting for the right moment to strike out. Mango waits, but Mango shots are not getting connected. He is waiting for the right opportunity to go with, but on the other corner, Ren also gets connected. Now it's all about NorthKings. NorthKings are being very dominant. उनके पास 5 खिलाड़ी अभी जीवित देखने को मिलेंगे, but Mango comes from the back foot, goes for a 1v1, goes for a 1v2, and yes, of course, a 1v2 were delivered. Now it's a 2v2 type of situation coming up. Oh man, Minazuki on the left. The enemy is coming. Shots are being delivered, no doubt on that. A nade goes in. Connections पर not there. वो nade यहाँ पे connect नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल, अपने sprays connect नहीं कर पा रहे हैं और चीजें यहाँ पे इसी तरीके से पलटती जा रही हैं for them. So there we go, another spottation from the back foot. One more takedown will be there. And yeah, there we go. Minazuki managed to take down Mango. That was an amazing blow. Loki Trash becomes the last man standing. He's the only ray of sunshine for the team. Time is about to run out, so he has to go ahead, fetch the bomb, and eventually plant it in the right area. And I guess he has got the freedom of actually choosing the side that he want to actually appoint on, but eventually going to that side is going to be very troublesome for him. That's what we are looking up to. Look at that. Couple of minutes more to go, couple of shots going up, and Loki Trash gets taken down. Minazuki managed to do a beautiful 1v2. It's a 6v5 score coming up. Gorilla Squad has to patch up themselves and eventually go back once again in the battle arena and gain the points. You guys remember that the clash between these guys are unreal. Look at that. First time I guess I'm going to hop into an overtime. लग रहा है कि कहने के वो overtime देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो स्कोर कार्ड है वो काफी ज्यादा सिमिलर अभी देखने को मिल रहा है. मेमोरिया की तरफ से देखिए बॉलर को टेक डाउन कर दिया गया व्हीकल ब्लू के थ्रू, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस इफ आई टॉक अबाउट द अदर गाइस, जैन एंड मैंगो आगे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं. मैंगो को डाउन कर दिया जाएगा, मैंगो के अलावा जैन को भी टेक आउट यहाँ पे कर दिया जाएगा. इंटरेस्टिंगली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेयो की तो उनको भी टेक डाउन यहाँ पे कर दिया जाएगा. एंड फाइनली लोकी ट्रैश बिकम्स द लास्ट मैन स्टैंडिंग, एंड लोकी ट्रैश को फिर से 1v4 करके दिखाना है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल अभी मुझे लग नहीं रहा. आई डोंट थिंक सो दैट इट्स गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर दिस गाय टू गो फॉर अ 1v4. बट लीजिए एक खिलाड़ी को तो डाउन करेंगे. यहाँ पे नारीमैन को टेक डाउन किया, दूसरे का पिक आउट करने की कोशिश. क्लोज क्वार्टर में इनके ऊपर 3-3 चढ़ चुके हैं फिलहाल खिलाड़ी. अल पचिनो का 1v1 देखने को मिला. Now it's the overtime. That's amazing. Lead by 2 points or reach the target point first. वो देखने को मिलने वाला है गाइस. अगर 2 बार लगातार या तो मेमोरिया जीत जाती है या तो नॉर्थ किंग्स जीत जाती है, तो we'll get the clear winner of this particular matchup. अगर नॉर्थ किंग्स 2 बार लगातार जीत जाती है तो आप जानिए गाइस बेस्ट ऑफ 3 यहाँ पे खत्म हो जाएगा. At this exact moment the best of 3 will get over and eventually we'll get the winner of the semi-finale 2. एंड वो कौन रहेगा? वो रहेगा नॉर्थ किंग्स. अगर यहाँ पे बेस्ट ऑफ 3 में ये बैक टू बैक ये दोनों मैचेस को, ये दोनों राउंड्स को अपने नाम ले जाते हैं, इफ दैट डजंट हैपन then we'll have a second chance for team Memoria and maybe Memoria will bring back the glory for the team and eventually we'll get the map of control for us to see. तो देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी, कंट्रोल मोड आता भी है या फिर नहीं आता है. कंट्रोल से पहले ही गेम बाइंड अप हो जाता है, बाइंड अप हो जाता है तो भी एक अच्छी चीज़ है, नहीं भी होता है तो भी एक अमेजिंग चीज़ देखने को मिलेगी. बिकॉज देखिए यहाँ पे हम लोग सब प्रेजेंट हैं उस कंटेस्टमेंट को, उस फाइट्स को यहाँ पे देखने के लिए. सो यस, मैं ये चीज़ कहूँगा कि जो फाइट है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे चलती जा रही है, जो कंटेस्टमेंट है बहुत ही डिसेंट एक लेवल पे जा रही है. बट इनके की बात करी जाए स्पेसिफिकली, लीजिए उनके खिलाड़ी डाउन हो रहे हैं. मिनाजुकी की तरफ से बॉलर को टेक डाउन यहाँ पे कर दिया जाएगा. बॉलर के अलावा अगर मैं बात करूँ बाकी प्लेयर्स की, वो भी यहाँ पे टेक डाउन होते दिख रहे हैं. एक अच्छा खासा मैं कहूँगा गन गेम ऑलरेडी यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिख रहा है. मिनाजुकी की अगर बात करी जाए बैकफुट पे वो देखने को मिल रहे हैं. एक अच्छी स्ट्रैटेजी उन्होंने डेवलप कर लिया है कि हम पॉइंट को किस तरीके से निकालेंगे, बट स्ट्रैटेजी पे कितना ऑन पॉइंट रह पाते हैं वो जानना कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. 4v4 का स्कोर
Look at that. Score chart same hai. From the back end, Minazuki gets taken down. Lower is just taken down. Kazaka. Look at that. Memoria. They are leading. How much they can actually go for that is something which we have to know right now. अगर फिर से कहीं ना कहीं नॉर्थ किंग्स ने 7-7 का स्कोर टच कर लिया तो फिर से हमें ओवर टाइम देखने को मिलेगा. अगेन विल मूव टू एन ओवर टाइम. What happens, guys? What do you think? A tough one indeed. A tough one for these guys. एक अच्छा खासा मैच आगे बढ़ता हुआ देखिएगा. मैं फिलहाल लूकी ट्रैश की बात करी जाए, वेट कर रहे हैं सही मौके का कि कब वो अपने बैक ट्रैश को पे लेके जा पाए. डीएलक्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं. डीएलक्यू अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गन है बिकॉज अगर उसका एम लग जाता है देन यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू टेक द गाय डाउन. बट वहीं एम अगर नहीं लगता तो इसके जो कॉकिंग टाइम होता है उसमें आप चीज़ें बदल सकती हैं. उसमें सामने वाले प्लेयर्स आपके ऊपर इजीली स्प्रे डाउन आपको कर सकते हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ें कहने के हर एक गन को या तो काफ़ी बढ़िया बना देती हैं या फिर कहने के कुछ एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज के पैरामीटर्स में उनको तोल दिया जाता है. इनके की बात करी जाए, वेट कर रहे हैं चुपचाप, काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं गेम को बिकॉज गाइस आप मानिए ना मानिए गेम बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है इनके के लिए बिकॉज दिस इज द गेम वेयर इफ इनके इज एबल टू विन इट दे विल स्ट्रेट अवे गो टू द ग्रैंड फाइनल. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है अपने आप में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनकी की तरफ से एक अच्छा क्लैश यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक अच्छा टेक डाउन यहाँ पे देखने को मिलेगा. जैन को डाउन कर दिया जाएगा. मैंगो की बात करी जाए, मैंगो वेट्स फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी और मैंगो को वो अपॉर्चुनिटी अभी मिल नहीं पा रही है तो इसलिए वो चुपचाप स्थिर यहाँ पे देखने को मिलने पा रही है. इज नॉट मूविंग अ लॉट ऑफ मसल्स राइट नाउ. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नारीमान की, वो आपको देखने को मिल ही रहे हैं. Loki Trash waits for the right moment, wanting to strike on the guys, wanting to actually hunt down the POV. Can he actually go for it? Can he actually successfully devour the enemy? That's the biggest thing coming up. Icebreak Series 2 semi-finale match number 2 is coming up for you guys. Look at that. Mango also gets countered. North Kings एक अच्छा domination establish कर रही है, एक और खिलाड़ी को डाउन कर सकते हैं एंड किया भी कहीं ना कहीं. Now it's all about the last two members surviving. Switch ब्रे लेके खिलाड़ी थे खड़े, उनको भी टेक डाउन किया जाएगा. Now it's a 1v2 situation coming up. Finally I believe टेक डाउन कर सकते हैं. It's a 1v1. Daddy OPS versus Loki Trash. Both of them are surviving right now. Daddy OPS is actually there, going ahead to actually plant the bomb if I'm not wrong. This is the guy who has to go for it. Or is it going to be Loki Trash? Loki Trash pushes forward, gets spotted, gets taken down, and finally, once again, the overtime is going to be there if I'm not wrong. And the target is actually of 9 rounds to win. Amazing situation. I mean, I'm actually loving the whole contestment coming out right now. A lot of overtimes are coming up, and this is the first time in the GD Esports Series 1, Series 2 to be precise, that we are actually looking up to a overtime coming up. Baller. Waits for the right moment, waits for the right opportunity. Can he bag the one? I doubt it. Well, there we go. Baller gets taken on. Ball bank comes in from the areas of Minazuki, and that was an amazing one. Eddie Opus is for sure going to go and land the bomb before it gets too late. And yes, of course, the bomb has been planted. Now the time is actually getting countered. 40 seconds more to go. Zan is not looking that auspicious at this moment, nor either is Loki Crash. But Zan goes in, clutches the fight, devours the point. Interesting one. It's a 1v4. It's a 2v4 to be honest. Yeah, it's a 2v4 situation coming up. Definitely a tough one for them. Loki Trash meanwhile gets concluded. Lost that round, but it's not. Oh man, look at that. 8 for the Gorilla Squad, 7 for the Special Forces. One more to go for team known as NorthKings, and that's gonna be it for the game for them. So yeah, moving up ahead, let's see what happens eventually. देखते हैं क्या सिचुएशन यहाँ पे टीम्स लेके आगे बढ़ पाती हैं. नॉर्थ किंग्स से यहाँ पे अपना ये मैच लेके जा पाएगी बिकॉज देखिए यार मैं काफ़ी देर से इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि नॉर्थ किंग्स हैज गॉट दी अपॉर्चुनिटी, बट नॉर्थ किंग्स उस अपॉर्चुनिटी को बार बार लूज कर रहे हैं बिकॉज मेमोरिया का जो गन गेम है वो सर्च एंड डिस्ट्रॉय में एक एक्सेप्शनली वेल लेवल पे स्किल्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है. बिकॉज ये जो गेम है हमें पहले देखने को नहीं मिला सर्च एंड डिस्ट्रॉय में. सर्च एंड डिस्ट्रॉय में आपने देखा कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे कहने के हारी थी हमारी टीम मेमोरिया, बट जब बात आती है सर्च एंड डिस्ट्रॉय की वहाँ पे देखिए कितना अच्छा गेम निकल गया. आई मीन आई वाज टॉकिंग अबाउट हार्डपॉइंट में लिटरली 163 पॉइंट्स की जो लीड थी वो उनके हाथ से निकल गई थी. आप देखिए समझिए फिलहाल इस एक चीज को. बट लीजिए नॉर्थ किंग्स के प्लेयर्स धीरे धीरे करके डाउन होते जा रहे हैं. यहाँ पे नॉर्थ किंग्स के 2-3 खिलाड़ी यहाँ पे टेक आउट हो चुके हैं. फाइनली इट्स ऑल अबाउट द लास्ट 2 players. That's going to be Nariman and Daddy OPS. These are the 2 members which are still surviving. They have to go ahead counter the fights in their favor. बॉम्ब भी इनके पास नहीं है. बॉम्ब देखने को मिलेगा जैन के हाथ में. जैन यहाँ पे पुश कर रहे हैं. 7v2 coming up. Okay, gets spotted. Zan will be able to counter it out or not. It's now a 1v3 situation. Okay, the sprays are coming. Finally. Score once again comes to an equalizer. Look at the target, guys. It's off 8 rounds now. Amazing, man. Amazing. Honestly, amazing. What a performance coming from these 2 particular teams. North Kings, whenever they try to counter, at the same exact moment, Memoria is there to counter them back. क्या बात है? बहुत ही बढ़िया performance. बहुत ही बढ़िया contestment देखने को मिल रहा है. But कहीं ना कहीं it's high time right now. We have to see who is going to be the one going up to the grand finale. Is it going to be North Kings or is it going to be Memoria getting the second chance to take out the control in their favor?
क्या होगा गाइस? बताइए, आप लोग कमेंट डाउन करिए गाइस। फटाफट से हमारे मॉडरेटर्स आपको सारे रिप्लाईज और सारी चीजें जो है वो बताते हुए दिख जाएंगे फिलहाल। तो जाइए, गो अहेड एंड कमेंट डाउन, लेट अस नो अबाउट व्हाट यू गाइस आर थिंकिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, make sure to follow GD Esports on Instagram and check out the stream on YouTube as well. A lot more streams are going to be there, a lot more tournaments are going to be there from GD Esports, and we are here committed for you guys to give the best of the best. Definitely guys, go for it and eventually enjoy, and if there is any feedback, make sure to actually give us on the Discords and the other areas as well. Apart from that, one more take it down. That's interesting. NorthKings once again bouncing back. They are proving themselves as an asset for the team. Apart from that, look at that. It's a 2v2 situation coming up. Sprays are there, but El Pacino devours once again. Loki Trash becomes the last man standing, gets spotted, gets taken down, and finally, once again, NorthKings comes up with a beautiful amount of, let's say, lead. Now, NorthKings has to bag the last one as well. Otherwise, once again, it's going to be an overtime coming from the Memoria. Defend the objective. क्या लगता है guys? Overtime होगा इस बार? कमेंट डाउन करिए, आप लोग प्रेडिक्ट करते जाइए गाइस। देखिए, आप लोग प्रेडिक्शंस अपने बना के रखें यहाँ पे फिलहाल। क्या लगता है कि पे ओवरटाइम हमें देखने को मिल पाएगा या फिर नहीं? लेट अस नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक? On the other corner, on the verge of a decimation, we see more and more people trying to perform. Sprays are there. Zen is trying to overcome it, and the other guy that's going to be RERUN, they're trying to just attain some good points. But there we go. Beautiful kill comes in. Mango gets taken down. Apart from that, Morin was sprays. Oh, Nariman also gets contested from the left corner. Look at that spray. Minazuki goes in and collects two good frags. Now Loki Trash once again becomes the last one surviving. He's the only ray of sunshine for the team. Not looking that easy at this moment. And there we go. Finally. The game is pretty much over. If I'm not wrong, the fight is over. It's done and dusted. It's going to be NorthKings who is going to win this one, bag this out, and eventually go for the grand finale. Amazing contestment, amazing synergy from their particular corner. Love the way the game actually went out for this particular team, but as you all can see, NorthKings in the best of 3 were able to bag it out. In the first match, the lead was absolutely amazing. It was of 163 points if I'm not wrong, but in the second one, the lead was of only 2 points. We had 3 overtimes if I'm not wrong, so yeah, that was absolutely amazing. But now moving up ahead, we are going to go for the replay and check out the replay, because that replay will showcase that what actually happened in the game in a brief time period. Actually, a lot happened in the game, but एक करके चेकआउट करते हैं गाइस। रिप्ले के थ्रू आप एक करके सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, फिलहाल शुरुआत जब करी थी यहाँ पे कहने की टीम मेमोरिया ने बहुत ही अच्छी करी थी। 4-5 पॉइंट वो इजीली निकालते ले गए थे। आई गेस 5 तक वो लेके गए थे एंड स्कोर था 5-1 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड उसके बाद चीजें पलटती हुई दिखी थी। देखिए, नारीमैन की बात कर लीजिए या फिर एल पचीनो की बात करिए, उन्होंने अपने आप में बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिया था। उन्होंने शोकेस किया था अपना टैलेंट, बट फिर भी यहाँ पे कुछ खास कामयाबी उनको मिल नहीं पाई थी। अब देखिए, वुल्फ उन्होंने अब अटैक किया, लेकिन वो लेफ्ट साइड से टेक डाउन होते हुए दिखे। एंड फाइनली यहाँ पे डैडी ओपीएस की तरफ से भी गेम चेंज होता हुआ दिखा। उसके बाद स्कोर 6-4 का हो गया था एंड तब यहाँ पे कहने के लगा कि फिलहाल अब मेमोरिया जीत जाएगी। बट होता क्या है, एट दैट सेम एग्जैक्ट मोमेंट मेमोरिया को काउंटर करते हुए निकल जाती है हमारी टीम, ये पर्टिकुलरली जिनका नाम है इनके, यानी कि नॉर्थकिंग्स की तरफ से वो काउंटर देखने को मिला। उसके बाद 60 से स्कोर आ गया। उसके बाद टारगेट देखने को मिला एक ओवर टाइम के साथ आपको 8 का, एंड देन अगेन फिर से 7-7 का स्कोर देखने को मिल गया। उसके बाद फिर से एक ओवर टाइम आपको देखने को मिला एंड उस ओवर टाइम में आपको 9 राउंड का जो लिमिट था वो टच करना था। वहां पे भी हमें एक और ओवर टाइम देखने को मिला बाय टीम नॉर्थकिंग्स। एंड लास्टली अगर हम बात करें स्कोर की, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मैंगो is the MVP for team Memoria with the score of 2,435, 22 kills, 0 diffusions, 0 plantations. And when it comes to the score of NK Minazuki, that is the team which won the battle, is the score is coming up as 2,333. Apart from that, kills were 19, plantation was 0, diffusions were 1. So this is how the score is going to go on. Moving up ahead, as you all can see, this was absolutely an amazing, heart-throbbing match, to be precise. काफी मजा आया, काफी अच्छा एग्रेशन यहाँ पे देखने को मिला, काफी अच्छी फाइटअप्स यहाँ पे देखने को मिली। बट गाइस, रिमेंबर that now we are going to witness GodLike versus NorthKings. It's going to be one hell of a battle coming up. It's a best of 5, so again a good thing for you guys. It's not going to be a best of 3. Veto वगैरह बाकी सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, but we'll talk about all of those stuff after a short break. We are going to take a short break and then again we'll bring the finalists in front of you.